Today we will be talking about some more details of immunoassays, how to detect like the label, like we label the analytes, and now how to analyze or how to detect the label. So the last step, common for all immunoassays, is the detection of labeled analyte. So detection of labeling is important. So how we could detect that? So the method depends on the label actually. So the label is important. How and that depends actually what label is it. So if that is iodine 125, that is radioisotope, so is easily detected by gamma counter. So gamma counter, gamma radiation counter is zero, so it counts the radiation actually. And if the level is enzyme, so enzyme are generally used to produce color products from colorless substrates that can be determined easily in spectrophotometer or colorimeter. So so for enzyme, so it will basically it will convert colorless substrate into colored products. So those colored products can then be recognized. And automated plate readers are there, and they are commercially available, which make like reading large number of samples relatively easy. So the whole plate can be read in ELISA plate reader. And there are certain quality controls like that's important. It is essential that quality control procedures be established. This is done to limit the random errors. It needs to be in the error rate should be like reduced. Like temperature fluctuations must be less. Minor changes in the concentration of reagents should be detected, and changes in the detector efficiency. So a negative control and a positive control should be run, and this serves as a check on the quality of the reagent and make sure that the level is readily detectable under current testing conditions. So if there is a level but that couldn't be detected in certain conditions, in certain specific conditions, and those specific conditions are prevalent, then there is like the level is no more of any use actually. इसकी समझ आ गई क्वालिटी कंट्रोल की? Yes, sir. अच्छा, कोई एक्सप्लेन Yes, कर sir. देगा, कोई एक्सप्लेन कर देगा इसको? कौन एक्सप्लेन करेगा इसको? सर इट्स सिंपल सर कि हमें कोई भी टेस्ट करना है तो वी शुड ऑलवेज प्रोसीजर विद द पॉजिटिव कंट्रोल एंड द नेगेटिव कंट्रोल. इसका फायदा ये होगा सर कि इससे हमें पता चल जाएगा कि भाई हमारा जो रिजल्ट आना चाहिए था वो ये होना चाहिए था, और नेगेटिव कंट्रोल पॉजिटिव कंट्रोल ये हमें पॉजिटिव कंट्रोल से पता चलेगा. नेगेटिव कंट्रोल से हमें पता ये चलेगा कि जो हमारा केमिकल या जो हमारा क्वालिटी जो हमारा जो एंजाइम है या कोई चीज हम जिसको लेबल करके यूज कर रहे हैं, क्या वो इस केमिकल के अलावा किसी और के साथ भी रिएक्शन दे सकता है, नहीं दे सकता. तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल साइमल्टेनियसली करने पड़ते हैं. ये तो कॉमन फॉलो अप प्रोसीजर होता है हर एक्सपेरिमेंट का. एग्जैक्टली. और नेगेटिव कंट्रोल इसलिए भी होता है कि रिएजेंट्स में कोई कंटामिनेशन तो नहीं है, वो कलर या जो भी वो है लाइक डिटेक्टेबल मार्कर है. अगर ये आयोडीन 125 है, तो अगर हमें रेडिएशन मिल रहे हैं और हमने सैंपल नहीं डाला हुआ और फिर भी हमें लाइक रेडियोएक्टिविटी आ रही है, तो इसका मतलब है कि लाइक देयर इज सम कंटामिनेशन इन आवर रिएजेंट्स. ठीक है. कोई भी प्रोसीजर हो, लाइक पीसीआर हो, कोई भी चीज हो, उसमें नेगेटिव कंट्रोल इस वजह से यूज किया जाता है कि कंटेमिनेशन को देख लिया जाए, या कोई अल्टरनेट अगर कोई प्रोसीजर हो रहा है, लाइक हम पीसीआर लगा रहे हैं और पीसीआर प्रोडक्ट आ रहा है और हमने डीएनए ऐड ही नहीं किया हुआ नेगेटिव कंट्रोल में और पीसीआर प्रोडक्ट फिर भी आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो हमने रिएजेंट्स हम यूज कर रहे हैं, तो लाइक एंजाइम और ये सारी चीजें वो कंटेमिनेट है, ऑलरेडी उसमें डीएनए मौजूद था. ठीक है. लाइक कोई भी प्रोसीजर हो, लाइक
ठीक है. So yeah, similar in this case कि like हमें फ्लोरेसेंस मिल रही है या हमें कलर मिल रहा है, तो उसका मतलब है कि हमारे reagents जो हैं वो like contaminated हैं या reagents में कोई problem है. So negative and positive control is to check like अगर हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. अगर हमारे पास रिजल्ट like एक्सपेरिमेंट में नहीं आ रहे तो हमने पॉजिटिव कंट्रोल लगाना है ताकि हम चेक कर सकें कि रिजल्ट आ रहे हैं लेकिन हमारे सैंपल में कोई इशू है. तो इस तरह की चीज़ें जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल के साथ चेक की जाती हैं. ठीक हो गया. सर जी जी जी. आमना, do you want to ask question somebody or should we go further? ओके समझ आ गई, ये क्लियर है ना ये चीज? यस सर जी सर जी ओके 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 दैट्स गुड. ओके so and next is this thing. These are actually three types of ELISA, like and three types of ELISA की ये तीन types है. आगे जाके फिर इसकी details हैं. The first one is indirect ELISA, second one is sandwich, third one is competitive. इनडायरेक्ट एलाइजा अगर यहाँ से असल में इस वजह से यहाँ पे दिए कि आगे जाके इसकी एक्सप्लेनेशन है, चीजें फिर आगे जाके और फिर क्लियर होती जाती हैं. सो इनडायरेक्ट एलाइजा, सैंडविच एलाइजा और कॉम्पिटिटिव एलाइजा में क्या फर्क है, यहाँ पे ये देख लें. फर्स्ट वन जो है इनडायरेक्ट एलाइजा, ये असल में well है for like this may be a test tube or this may be ELISA plate. उसके wells हैं. उसमें पहले क्या करते हैं कि ये सॉलिड सपोर्ट को, इसको प्लेट को, इसको कोट करते हैं एंटीजन के साथ. सो एंटीजन कोटेड वेल इज दिस. सो जैसे ही हम इसको कोट करेंगे मींस के एंटीजन यहाँ पे बाइंड करवाएंगे, उसके बाद वॉशिंग स्टेप है, ठीक है, ताकि अनबाउंड एंटीजन जो है वो रिमूव हो जाए. उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एंटीबॉडीज ऐड की जाती हैं. when the antibodies are added, so और उसके बाद अगेन वॉशिंग, ताकि जो अनबाउंड एंटीबॉडीज हैं वो वॉश आउट हो जाए. तो यहाँ पे क्या होगा कि एंटीबॉडीज जो हैं वो एंटीजन के साथ बाउंड हो जाएंगे. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा कि वी नीड secondary antibody, means anti-antibody, means this antibody will be against the common region of the constant region of this antibody. So this will be anti-antibody, and this antibody has been like linked with an enzyme. You can see E is there, enzyme is linked with this with the secondary antibody. Now, and again, the washing step, because if the secondary body is unbound, so the unbound secondary antibody could be washed out, and then the substrate is added. The substrate is added, it will react with the enzyme, and it will give us color. So this is like indirect ELISA. So indirect ELISA is usually done to detect the antibody. So and sandwich ELISA, in the sandwich ELISA, first of all, antibodies are taken. Antibodies are the wells are coated with the antibodies, and then washing step, and then antigens are added. Antigen are added, and then again washing step, and then the secondary antibody, which will be against the another epitope of the antigen, and that will be added, and that secondary antibody is bound with the enzyme, and then again substrate is added, and that substrate will give us color by using the enzyme. So now you can see this is a bit different from that one, because here the antigen is sandwiched between the two antibodies. And what is the difference between this and this? Here the sandwich and the antigen is not sandwiched, but instead one of the antibody is there in between an antigen and the secondary antibody. Here what is the difference between this secondary antibody and this secondary antibody? This secondary antibody is anti-antibody.
but this is not antibody. It will bind with the antigen, and here the epitope, the two different epitopes of the antigen are recognized here in this case. But here the single epitope will be recognized, and that will bind, the antibody will bind, and then the secondary antibody will bind with the primary antibody, and that's it. So here the antibody, and this will be the only the secondary antibody. That's it. Okay, and the third one is, this is the most important, and that is competitive ELISA. In the competitive ELISA, what is happening there? So in the competitive ELISA, first of all, the antigen and antibody are incubated. So pre-incubate the antibody with the antigen to be measured. So यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने एंटीजन को मेजर करना है. किस तरह? लाइक एक ब्लड सैंपल लेते हैं और हमने उसमें HCV लोड देखना है, तो हमने क्या करना है, उसके साथ एंटीबॉडीज को रिएक्ट करवाना है पहले. ठीक है, तो एंटीबॉडीज को रिएक्ट करें, हमें एंटीबॉडी की क्वांटिटी का पता होना चाहिए. सो अगर 10 मॉलिक्यूल हैं एंटीबॉडी के, तो हम रिएक्ट करवा लेंगे एंटीजन के साथ. तो उस एंटीजन को फिर ये जब बाउंड हो जाएंगे, उसके बाद हमने क्या करना है, प्लेट को, ऑलरेडी प्लेट जो है वो कोटेड होंगे विद एंटीजन. प्लेट्स आर कोटेड विद एंटीजन. तो एंटीबॉडी जो अनबाउंड रह गए हैं, दे विल बाइंड विद द एंटीजन, और जो ऑलरेडी बाउंड है वो जो है वो यहाँ पे प्लेट के साथ बाइंड नहीं करेंगे. सो वॉशिंग स्टेप में वो रिमूव हो जाएंगे. जो अनबाउंड एंटीबॉडीज थे, they will bind with the plate. After that, a secondary antibody has been added, that will be anti-antibody, and this antibody will recognize the primary antibody, and then enzyme will be added, substrate will be added there, and that will give us color. Here, one point we should know that the more the unbound antibodies, okay, sorry, more the antigen, the antigen, less will be the color. So this is actually reverse proportional. So the concentration of antigen and the concentration of antigen is inversely proportional to the color. So when the antigen is less, there will be more unbound antibodies, so more will be color. And if there is more antigen, so less will be the remaining unbound antibodies and less will be the color. And that's it. इसकी समझ आ गई कि नहीं? सर ये Yes, लास्ट sir. पॉइंट जो कलर वाला बता दो. सर ये हमने इंक्यूबेट क्यों किया? कोई अगर अपने वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन कर दें स्टार्ट से, तो वो फिर इजी हो जाना है सबके लिए. सर मैं बताऊं? मैं कर दूं? जी बता दें. सर इसमें हमने 3 टाइप के एलाइजा जो है ना वो देखे हैं, टेस्ट हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले इनडायरेक्ट है और सैंडविच्ड है और कॉम्पिटिटिव है. सबसे पहले हमारे पास इनडायरेक्ट है. इनडायरेक्ट में हम एंटीबॉडीज जो होती है ना, सिंगल एंटीबॉडीज, उनको डिटेक्ट करते हैं. उसमें सबसे पहले हमने एक टेस्ट ट्यूब ली या फिर वेल है, उसमें हम एंटीजन जो है उसको बाइंड कराएंगे और फिर उसकी वॉशिंग करा देंगे ताकि जो अनबाउंड एंटीजन है वो उससे रिमूव हो जाए. और फिर उसके बाद हमें उसमें एंटीबॉडीज ऐड करेंगे. एंटीबॉडीज जो है ना वो एपिटॉप्स के साथ ना, उस एंटीबॉडीज के एपिटॉप्स के साथ एंटीजन अटैच हो जाएंगे और जो फिर वॉशिंग करेंगे ताकि अनबाउंड जो एंटीबॉडीज है वो रिमूव हो जाए. और फिर इसके थर्ड स्टेप में हम एंटीबॉडीज जो हैं जिनके साथ एंजाइम्स अटैच हैं उनको दोबारा से ऐड करेंगे. और वो जो एंटीबॉडीज हैं वो जो प्रीवियस हमारी एंटीबॉडीज जो कि एंटीजन के साथ अटैच हैं उसके कांस्टेंट रीजन के साथ जाके अटैच हो जाएंगे. इनको हम एंटीबॉडीज बोलते हैं. और फिर हम वॉशिंग करेंगे ताकि जो अनबाउंड है वो रिमूव हो जाए. और फिर हम इसकी डिटेक्शन करेंगे विद द हेल्प ऑफ सबस्ट्रेट जो है उसको हम ऐड करेंगे. सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ रिएक्ट करेगा और फिर वो कलर शो करेगा, जिसकी वजह से हम उसको एंटीबॉडीज को डिटेक्ट कर लेंगे. इसमें हम सिर्फ सिंगल एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं, जबकि हमारे पास जो दूसरा वाला है वो है सैंडविच एलाइजा. सैंडविच एलाइजा में क्या होता है, हम पहले वेल में हम एंटीबॉडीज को ऐड करते हैं, एंटीबॉडीज को कोट करते हैं, एंटीबॉडीज जाके उसके साथ अटैच हो जाती हैं, फिर वॉशिंग करते हैं तो फिर जो अनबाउंड एंटीबॉडीज हैं वो रिमूव हो जाती हैं. और फिर उसके बाद हम एंटीजन अटैच करते हैं. इसमें एंटीजन जो है वो एपिटॉप्स के साथ, एंटीबॉडीज के एपिटॉप्स के साथ अटैच हो जाते हैं और फिर वॉशिंग करते हैं ताकि जो अनबाउंड एंटीजन है वो रिमूव हो जाए. और थर्ड स्टेप में हम सेकेंडरी एंटीबॉडीज ऐड करते हैं एज अ सेकेंडरी सोर्स, जाके वो उसके
एपिटॉप्स के साथ जो एंटीजन पहले एंटीबॉडी के साथ अटैच हैं, ये एंटीबॉडी के साथ अटैच नहीं होंगी जो अब हमने एंटीबॉडीज ऐड की हैं, वो जाके एंटीजन के साथ अटैच होंगी, और जो एंटीजन है वो सैंडविच हो जाएगा बिटवीन टू एंटीबॉडीज। और इनके साथ भी एंजाइम अटैच था सेकेंडरी एंटीबॉडीज के साथ भी, तो वो फिर हम दोबारा से सबस्ट्रेट ऐड करेंगे, और सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ फिर कलर शो करेगा रिएक्शन करके। थर्ड वाला हमारे पास था कॉम्पिटेटिव इलाइजा। कॉम्पिटेटिव इलाइजा में हमने क्या किया, हमारे पास इसमें क्या होता है, इसमें हम डिटेक्ट करते हैं एंटीजेंस के अमाउंट को। वो कैसे करते हैं, कलर के थ्रू करते हैं, जितना कम कलर होगा उतने ज़्यादा एंटीजन्स होंगे। और इसमें हमें एंटीबॉडीज़ की जो क्वांटिटी होती है ना वो नोन होती है। इसमें हम पहले जो है ना एंटीजन को एंटीबॉडीज़ के साथ अटैच कराते हैं और उसको इंक्यूबेट करते हैं, और फिर उसके बाद हमारे पास वेल है, और सेकंड स्टेप में उसमें पहले से ही जो है एंटीजन अटैच्ड है, उसके साथ एंटीजन कोटेड वेल है। और जब हम उसमें एंटीबॉडीज अटैच करेंगे, उसमें कुछ एंटीबॉडीज जो है एंटीजन के साथ अटैच्ड है, और कुछ जो है वो एंटीजन के साथ अटैच नहीं है। जो एंटीजन के साथ अटैच नहीं है वो जाके जो वेल के अंदर कोटेड एंटीजन है उनके साथ अटैच हो जाएंगे, और जो दूसरे वाले हैं वो जब वॉशिंग स्टेप करेंगे ना तो वो रिमूव हो जाएगी, जिनके साथ पहले से ही एंटीजन अटैच था उनके एपिटॉप्स के साथ। और थर्ड स्टेप में हम दोबारा से एंटीबॉडीज जो है उनको ऐड करेंगे जिनके साथ एंजाइम्स अटैच्ड हैं, और वो एंटीबॉडीज हैं, वो उसके साथ जाके जो प्रीवियस एंटीबॉडीज थी जिनके साथ एंटीजन अटैच है उसके साथ अटैच कर जाएंगे, और फिर हम वॉशिंग करेंगे, जो अनबाउंड है वो रिमूव हो जाएंगे, और फिर हम सबस्ट्रेट की हेल्प के साथ उसका कलर देखेंगे। इसमें यह था कि जितना ज़्यादा हमारे पास एंटीजन होगा, जो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास जितना ज़्यादा एंटीजन होगा उतना लेस कलर होगा, और जितना कम हमारे पास एंटीजन होगा तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो अनबाउंड एंटीबॉडीज है वो ज़्यादा होंगी, तो फिर वो ज़्यादा कलर शो करेगा इन पे। एग्जैक्टली समझ आ गई इस क्लास पूरी? क्लास इज इट क्लियर? नो सर, लास्ट कलर वाला पॉइंट नहीं क्लियर। हाँ, इसमें इस तरह होता है। ओके, इसमें इस तरह होता है लाइक वी हैव 10 एंटीबॉडीज। हमारे पास 10 एंटीबॉडीज हैं। मैं इसको अगर इस तरह लिखूं 10 एंटीबॉडीज हैं। सो और रिएक्शन में मेरे पास जो है वो 3 एंटीजन हैं। ठीक है। सो अब क्या होगा कि 10 एंटीबॉडीज मुझे ये नोन है, और एंटीजन का मुझे नहीं पता होता कि एंटीजन कितने हैं, लेकिन अगर सैंपल में 3 एंटीजन हैं तो उस केस में क्या होगा, 3 और ये इसमें इसके साथ बाइंड करेंगे 3 एंटीजन्स, 7 एंटीबॉडीज मेरे पास रह गए हैं। ठीक है, जो बाउंड नहीं होंगे, वो 7 जो है वो हमें कलर देंगे, उस कलर को हम नोट कर लेंगे। कोई और पेशेंट का सैंपल है और उसमें हमारे पास जो है वो 8 एंटीजन है। ठीक है, जब 8 एंटीजन होंगे, सो ओनली 2 एंटीबॉडीज विल बी रिमेनिंग अनबाउंड। 2 जो है वो अनबाउंड होंगे एंड वो कलर जो है 2 जो है हमें दो एंटीबॉडीज यहाँ पे बाइंड करेंगे, सो सिर्फ 2 हमें कलर देंगे। पहले वाले केस में 7 एंटीबॉडीज हमें कलर दे रहे थे, तो 7 एंटीबॉडीज कलर ज्यादा देंगे, 2 एंटीबॉडीज कलर कम देंगे। तो जो कलर ज्यादा दे रहे हैं, हम रिजल्ट क्या दे रहे हैं कि जो कलर ज्यादा दे रहे हैं उसमें मतलब है कि उसमें एंटीजन कम था, एंटीजन कम है, और जो कलर कम दे रहे हैं उसमें एंटीजन ज्यादा है। इज इट क्लियर फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव एज वेल और नॉट? सर कलर एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों पे डिपेंड करता है। हाँ, वो असल में इस तरह है कि इस केस में हम ये करेंगे कि हमारे पास एक ब्लड सैंपल आता है। ठीक है, मीन्स हमारे पास 2 ब्लड सैंपल आते हैं और हमने दोनों में एंटीजन को डिटेक्ट करना है थ्रू कॉम्पिटिटिव एलाइजा। तो हमारे पास होना चाहिए एक एंटीबॉडी कंसंट्रेशन ऑलरेडी हमारे पास होनी चाहिए क्योंकि ब्लड में सैंपल में हमने एंटीजन को काउंट करना है कि कितने एंटीजन कंसंट्रेशन कितनी है। सो हमारे पास एंटीबॉडीज नोन होने चाहिए। तो मेरे पास मुझे पता है कि मेरे पास कंसंट्रेशन एंटीबॉडीज की कितनी है। तो अगर एंटीजन ज्यादा है और मैं वही कंसंट्रेशन एंटीबॉडीज की रख रहा हूं,
तो अगर एंटीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा है, एक सैंपल में वायरल लोड ज़्यादा है, वायरस कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो मेरे पास जो है वो कलर कम आएगा, क्योंकि वो सारे एंटीबॉडी को कैप्चर कर लेगा। जो यहाँ के बाइंडिंग के लिए बहुत कम एंटीबॉडीज रह जाने हैं। लेकिन अगर सैंपल में एंटीबॉडीज कम है, ठीक है, तो यहाँ पे एंटीजन कम है, तो यहाँ पे एंटीबॉडी बहुत ज्यादा इस तरह रह जाएंगे जो अनबाउंड होंगे। अनबाउंड एंटीबॉडी सारे यहाँ पे वेल्स के साथ बाउंड हो जाएंगे, जो हमें फिर बाद में बहुत ज्यादा कलर देंगे। तो इसका मतलब है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि एंटीजन अगर ज्यादा है तो हमें कम कलर मिलेगा, अगर एंटीजन कम है तो हमें ज्यादा कलर मिलेगा, एंड दैट्स इट। ओके सर। ठीक हो गया। वेट मेरी सर एक बात पूछनी थी सर, जो अनबाउंड रह जाएंगे वो जाके नीचे उनसे मतलब कि अटैच होंगे सरफेस में। हाँ, जो अनबाउंड रह जाएंगे वही जो है एंटीबॉडीज वो यहाँ एंटीजन के साथ अटैच करेंगे। बाकी जो बाउंड है वो तो बाइंड नहीं कर सकते, बिकॉज देयर बाइंडिंग साइट्स आर ऑलरेडी कैप्चर्ड। सर वो वॉश आउट कर देंगे। हाँ, फिर उनको हमने वॉशिंग करनी है ना, तो वो वॉश आउट हो जाएंगे, सिर्फ बाउंड रह जाएंगे। यहाँ पे भी नजर आ रहा है ना, एक को दिखाया हुआ है किस तरह वो बाउंड रह जाएगा, बाकी तो वॉश आउट हो जाएंगे। जो ऑलरेडी यहाँ पे बाउंड थे ना, तो वो दोबारा तो वेल्स के साथ बाउंड नहीं हो सकते ना इनके साथ, तो तो वो वॉश सर आउट हो हमने जाएंगे। वो प्री इंक्यूबेट क्यों किया था सर? अच्छा अच्छा, अगर हमारे पास एक सैंपल आ जाए, बल्कि फॉर इंस्टेंस दो सैंपल हैं हमारे पास, ब्लड सैंपल्स हैं, और हमने उसमें एंटीजन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक ही तरीका है। अगर हम कॉम्पिटिटिव कर रहे हैं, यहाँ पे तो हम जस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव ढूंढ रहे हैं ना, यहाँ पे हम कंसंट्रेशन का भी मालूम कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन कितनी है। तो अगर हमारे पास एंटीबॉडीज नॉन है, कंसंट्रेशन नॉन है, हमने कंपनी से मंगवा लिए हैं, एक वायल में हमारे पास नॉन एंटीबॉडीज हैं, तो अगर हमारे पास उसकी कंसंट्रेशन नॉन है, एंटीजन की नॉन नहीं है, तो इस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं कि एंटीजन लोड कम है या ज्यादा है। समझ आ गई कि नहीं? आगे है सर। आगे है सर। फरीन, इसको थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर दें ये थर्ड स्टेप को, तो लाइक इट विल बी मोर क्लियर देन। सर आपने बताया कि अगर हमारे पास कोई ब्लड सैंपल है और उसमें हम एंटीजन ये करना चाह रहे हैं, लेकिन एंटीबॉडी हमें पता है, तो सर हम पहले एंटीबॉडी को उसके साथ इंक्यूबेट करवा देंगे, तो जितने एंटीजन होंगे वो उसके साथ अटैच हो जाएंगे और कुछ अनबाउंड एंटीबॉडीज रह जाएंगी। फिर उसके बाद सर हम उसको दूसरी तरफ उन दोनों का मिक्सचर लेंगे और एक सरफेस पे जहाँ पे एंटीजन लगे हुए, तो जो अनबाउंड एंटीबॉडीज होंगी वो उनके साथ जाके अटैच हो जाएंगी, और जो पहले से जिनके साथ एंटीजन थे हम उनको वॉश आउट कर देंगे, और फिर इसी एग्जैक्टली तरीके से हम अपनी दूसरी सेकेंडरी एंटीबॉडी लेके आएंगे जो उसके साथ अटैच हो जाएगी और फिर वो एंटायर एंटीबॉडी बन जाएगी। उसके साथ एंजाइम होगा, तो जब हम सबस्ट्रेट को अलाउ करेंगे उसके साथ रिएक्शन के लिए, तो फिर वो हमें कलर देंगे, और वो लेस कलर इसलिए देंगे जितने लेस एंटीजन होंगे तो उतना ही लेस कलर होगा। ठीक हो गया। उमर, आपको समझ आ गई है? उमर, उमर, आप मेरे ख्याल से सिर्फ स्टार्ट में आते हैं और एंड पे आते हैं। अच्छा अजीम, आपको समझ आ गई है? अजीम इज क्लियर? यस सर, आ गई है। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखें, क्योंकि एक चीज जो बताने वाली है पूरी क्लास, एक चीज इसमें याद रखें एलाइजा के, तो इसमें हमने हमारे ये कॉन्सेप्ट तो बन गए हुए हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटायर एंटीबॉडी एंड सेकेंडरी एंटीबॉडी। सेकेंडरी एंटीबॉडी तो सारे एंटीबॉडी होंगे, जो हम दूसरी एंटीबॉडी यूज करेंगे उसको हम सेकेंडरी एंटीबॉडी कहते हैं, लेकिन सारे सेकेंडरी एंटीबॉडी जो है वो एंटी एंटीबॉडी नहीं होंगे। मीन्स के ये इसको हम एंटी एंटीबॉडी कह सकते हैं, इसको हम एंटायर एंटीबॉडी भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस एंटीबॉडी को हम एंटी एंटीबॉडी नहीं कहेंगे, बिकॉज दिस इज अगेंस्ट द एंटीजन एंड नॉट द एंटीबॉडी।
ठीक है, समझ आ रही ना? यस सर, जो एंटीबॉडी के साथ अटैच होगी वो एंटी एग्जैक्टली एंटीबॉडी। एग्जैक्टली। अच्छा, अब ये याद रखें कि ये एंटीबॉडी बनते किस तरह हैं। इसकी समझ आ रही कि बनेंगे किस तरह, लाइक हाउ वी कैन प्रोड्यूस एंटी यस सर, एंटीबॉडी, किस तरह बनेंगे? तो जब वो जाके एंटीबॉडी के साथ अटैच होंगे, उसके कांस्टेंट रीजन को रिकॉग्नाइज करके उसके एक एंटीबॉडी के एपिटॉप जो है दूसरी एंटीबॉडी के कांस्टेंट रीजन के साथ हाँ, अटैच होंगे। वो तो ठीक है, वो ठीक है। जस्ट इसको, इस बात को इस तरह समझ लें कि हाउ वी विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज हम इसको प्रोड्यूस किस तरह करेंगे। लाइक यहाँ पे तो हम यूज कर रहे हैं ना, लेकिन इसको प्रोड्यूस किस तरह कर रहे हैं, पूरी क्लास इसको समझ लें। हमने क्या करना है, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस किस तरह करना है, पिछली क्लास में भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किसी किया था। और जी जी बताएं अजीम। अगर वो एंटीबॉडी जो हमें रिक्वायर है वो उठाकर किसी और के अंदर डाली जाए, वो हो सर वो उसको एज एंटीजन रिकॉग्नाइज करेंगे ना, अगर बाहर वो से एंटी एंटीबॉडी आई। एग्जैक्टली अजीम, आपकी आवाज कट रही थी, मुझे सही समझ नहीं आई, लेकिन चले होगा इस तरह। मुझे जो आपकी बात की समझ आई है, आप ठीक कह रहे हैं वैसे कि दूसरे ऑर्गेनिज्म में वो करें। अनाया, अब इस तरह है ना कि लाइक फॉर इंस्टेंस आई वांट टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट इंसुलिन जीन, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, इंसुलिन के प्रोटीन लेकर मैं लाइक रैबिट्स में, माइस में, हॉर्स में मैं इंजेक्ट करके तो वहां से मैं एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवा सकता हूँ, ठीक है? सो क्या करेंगे कि एक डोज देंगे माइस को या रेबिट्स या हॉर्स जो भी है, मैं कोई भी मैमल हो, तो उसको दूसरा डोज देंगे, उसको बूस्टर डोजेस कहते हैं, ताकि एंटीबॉडी प्रोडक्शन जो है वो इन्हांस करें, ठीक है? अच्छा, वहां से हम एंटीबॉडीज लेंगे, वो एंटीबॉडीज जो होंगे वो एंटीजन के अगेंस्ट होंगे। लाइक यहाँ पे जो एंटीजन मैं यूज कर रहा हूँ, इसको, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज क्या होंगे, ये मैं रैबिट्स में इंजेक्ट करूंगा तो उसके अगेंस्ट इस तरह के एंटीबॉडीज बनेंगे, ठीक है? सो तो ये वाले एंटीबॉडीज जो हैं ये इस एंटीजन के अगेंस्ट एक्टिव होंगे, इसके साथ रिएक्ट करेंगे। लेकिन हाउ टू प्रोड्यूस दिस वन, तो फिर उसमें ये किया जाता है कि रैबिट में जो फॉर इंस्टेंस ये मैंने रैबिट में रेस किए हैं ना ये एंटीबॉडीज, तो मैं ये रैबिट वाले एंटीबॉडीज लेकर किसी और स्पीशीज में इंजेक्ट करूंगा, लाइक इसको माइस में इंजेक्ट करूंगा। तो माइस में इन एंटीबॉडीज को जब माइस में इंजेक्ट करूंगा तो वहां पे इन एंटीबॉडीज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेंगे। सो दैट विल बी एंटी माइस, एंटी रैबिट एंटीबॉडीज, ये ठीक सर है? जब आप उसको माइस में इंजेक्ट करेंगे तो फिर वो एज एंटीजन एक्ट करे। हाँ एग्जैक्टली। तो इस टर्म को याद रखें, इस टर्म को याद रखें कि अगर ये रेज हुए हैं रैबिट्स में, सो इट शुड बी एंटी रैबिट एंटीबॉडी। अगर ये रेज हुए हैं माइस में, तो दिस शुड बी एंटी माइस एंटीबॉडी। अगर ये रेज हुए हैं हॉर्स में, तो दिस शुड, हाँ ठीक है चले। अच्छा देखिए, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम जो है एंटीबॉडीज को एनिमल्स में, मैमल्स में जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो मैं एंटीबॉडीज मैंने बनाने हैं तो मैंने उसमें इंजेक्ट करना है ये एंटीजन, ठीक है? ये इस एंटीजन के अगेंस्ट इस तरह के एंटीबॉडीज बनेंगे जो इसके साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है? अच्छा, जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये वाले एंटीबॉडीज, अब मैं चाह रहा हूं कि इन एंटीबॉडीज के अगेंस्ट एंटीबॉडी बने और वो सेकेंडरी एंटीबॉडी हो और वो जो है वो एंटा एंटीबॉडी हो, ठीक है? सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये वाले एंटीबॉडीज अगर मैंने माइस में रेस किए हुए हैं ना, चूहों में, सो मैं ये एंटीबॉडीज अगर दोबारा माइस में डालूंगा तो वहां पे इनके अगेंस्ट रिएक्शन नहीं आएगा। इस वजह से मैं चाहूंगा कि किसी और स्पीशी में लेके जाऊं इन एंटीबॉडीज को, मैं हॉर्स में लेके चला जाता हूं या रैबिट्स में लेके जाता हूं। तो हॉर्स में अगर मैं इसको रेस करूंगा तो वहां पे इनके अगेंस्ट एंटी माइस एंटीबॉडीज बन जाएंगे। मींस अगर ये माइस में मैंने रेस किए हुए हैं तो एंटी माइस एंटीबॉडीज बन जाएंगे, ठीक है? सो एंटी माइस एंटीबॉडीज अगर प्राइम, मतलब सर जो माइस की एंटीबॉडी, हाँ सिंपल इसको इस तरह समझ लें, वर्क करेंगी। एग्जैक्टली सिंपल इस तरह समझ लें कि अगर प्राइमरी एंटीबॉडी माइस की है ना, तो सेकेंडरी एंटीबॉडी एंटी माइस हो,
अगर प्राइमरी एंटीबॉडी गोट हो तो सेकेंडरी एंटीबॉडी एंटी गोट एंटीबॉडी हो। अगर प्राइमरी एंटीबॉडी हॉर्स है तो सेकेंडरी एंटीबॉडी एंटी हॉर्स एंटीबॉडी हो। ठीक है। अच्छा, सर ब्लड रिजेक्शन के केसेस में भी तो इस तरह का प्रिंसिपल फॉलो होता है ना? हाँ बिल्कुल, वो सेम ही प्रिंसिपल है, सेम ही है। इसमें हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोडक्शन को हमने डिस्कस नहीं किया हुआ, वैसे ये सारे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होंगे, लेकिन हम इसके डिटेल में नहीं गए कि हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को क्यों किस तरह बनाना है। वो असल में हम अपने टॉपिक से फिर बहुत डाइवर्ट हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल यही समझ लें कि हमने जो एंटीबॉडीज जिस ऑर्गेनिज्म में बनाना है, अगर उसका एंटी बनाना है तो वो किसी और स्पीशी में उसके बनाना है। ठीक है, तो वहाँ पे वो एंटीबॉडी एज एंटीजन वर्क करेगी एंड दैट विल बी, उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनेंगे उन एंटीबॉडीज को हमने एंटी एंटीबॉडी यूज करने हैं। ठीक है सर। यस जी सर। जी। सर जो ये विजुअलाइजेशन है इसके अंदर कॉम्पिटिटिव के अंदर जो सेकेंडरी एंटीबॉडी यानी एंटी एंटीबॉडीज की एंटीबॉडीज का इंटरेक्शन है, उसमें वो ये शो कर रहा है कि जो एंटी एंटीबॉडीज हैं वो अटैच हो रही है एफसी रीजन के साथ, प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ। जी तो जी सर एफसी एग्जैक्टली। रीजन तो कंसिडर नहीं होता सारी एंटीबॉडीज के अंदर, तो हाँ, वो ये स्पेसिफिकली नहीं नहीं, इसी वजह से हमने असल में टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज नहीं पढ़े हुए हैं। हम वो भी पढ़ेंगे, लाइक अगर हमें टाइम मिला ना तो हम वो भी पढ़ेंगे कि लाइक आइसोटाइप क्या है और लाइक एलो है क्या है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। असल में इसमें ये होता है कुछ केसेस में, लाइक ह्यूमन का जो ये एफसी रीजन है दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम गोट, गोट विल बी डिफरेंट फ्रॉम माइस, माइस विल बी डिफरेंट फ्रॉम हॉर्स। सो ये सब में डिफरेंट होगा, ये एफसी रीजन इज डिफरेंट। ठीक है, एफसी रीजन डिफरेंट होगा सब में। हाँ, और जो एफ ए बी रीजन है वो तो बहुत ही लाइक प्रिसाइज होता है, वो तो एंटीजन के अगेंस्ट होता है ना। लेकिन एफ सी रीजन जो है, दिस रीजन, ये हम इसके टाइप्स में पढ़ लेंगे कि लाइक हाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन लाइक, ये ग्राफ्ट रिजेक्शन के केस में भी इस तरह होता है कि सेम स्पीशी का ह्यूमन में भी रिजेक्शन हो जाती है ना, तो वहां पे भी ये चीजें हम पढ़ेंगे, वो डिस्कस करेंगे इसको। लेकिन फिलहाल ये समझ लें कि FC region in the goat will be different from the mice, in the mice will be different from rabbits and so on. तो स्पीशी के डिफरेंट करने से ये डिफरेंट होंगे। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर एक बात ये पूछनी थी कि सर जिस तरह हमने पहले एंटीबॉडी अगर माइस में प्रोड्यूस की है और फिर हाँ उसको हाँ, हमने रैबिट में इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो सर वो एंटीबॉडी माइस के लायक रैबिट इस बार की। आप अपना क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट करें, मैं एग्जैक्टली समझना चाह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन क्या सर है। देखिए ना, हमने पहले माइस में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाई और फिर उसको एज एंटीजन जब रैबिट में डाल दिया, और फिर वहां पर जब एंटीबॉडीज उसके खिलाफ प्रोड्यूस हुई तो वो एंटीबॉडी माइस होगी या रैबिट होगी? देखिए, अगर हमने माइस में एंटीबॉडीज को रेस किया हुआ है, प्राइमरी एंटीबॉडीज, और वो प्राइमरी एंटीबॉडी किसी एंटीजन के अगेंस्ट है, मैं अब ये चाह रहा हूँ कि इन एंटीबॉडीज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज में बना सकूं। ठीक है, तो वो वहां से मैं एंटीबॉडी कलेक्ट करूंगा, ठीक है, माइस से, और उसको मैं लेके जाऊंगा, चले लाइक हॉर्स में लेके जाऊं। ठीक है, तो हॉर्स में माइस के एंटीबॉडीज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेगी। So that will be anti-mice antibodies raised in horse. ओके जी। ठीक है, अच्छा, इसको जर्नल जो वैसे लोग लिखते होते हैं तो आपने देखा होगा, इसको IgG लिखते हैं, और इसको एंटी, लाइक ये IgG है तो इसको एंटी IgG लिखेंगे। आपको इस तरह के टर्म भी मिलेंगे ना। यस ठीक है, सर। वो हाँ, तो दैट विल बी एंटी IgG। लेकिन वो कॉन्सेप्ट क्या है, दैट इज मैंने बता दिया कि किस तरह उसको रेस करेंगे, किस तरह प्रोड्यूस करेंगे एक्चुअली। ठीक है, शुड आई गो फर्दर? यस सर। यहाँ तक क्लियर है ना सारा? यस। यस सर। यस सर। कोई यस क्वेश्चन हो, सर, कोई बात हो, कोई क्लियर कंफ्यूजन है। हो, बताएं ताकि वो क्लियर हो अभी से। इट्स क्लियर? यस सर। नो सर। ओके, सो
अब यही चीजें थोड़ा सा अगर हम इसको इस पर्सपेक्टिव में देखें कि देयर आर थ्री टाइप्स several types of ELISA. The most important are indirect ELISA, and that is used to detect the presence of antibody, and like in HIV infection viral core protein अगर हम इसको एंटीजन अगर कंसिडर कर लें, उसको हमने क्या करना है, बॉटम ऑफ द वेल के साथ जो है वो एब्जॉर्ब करवाना है, वो कोट करने हैं वेल्स को. उसके बाद एंटीबॉडीज फ्रॉम द पेशेंट आर देन एडेड टू द कोटेड वेल and that will bind to the antigen. और उसके बाद enzyme linked antibodies जो है वो to human antibodies will be for instance goat antibodies that recognize human antibodies are allowed to react in the well, and unbound antibodies are removed by washing. Substrate is then applied and that will give color. So that was indirect ELISA. Sandwich ELISA में क्या था कि इसमें हम क्वांटिफाई करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, क्वांटिफाई भी कर सकते हैं एंटीजन को. एंड एंटीबॉडी टू अ पर्टिकुलर एंटीबॉडी इज फर्स्ट एब्जॉर्ब. एंटीबॉडी को पहले बॉटम लाइक कोट करते होते हैं वेल्स को, और उसके बाद हम एंटीजन को ऐड कर देते हैं. एंटीजन कुड बी फ्रॉम द ब्लड सोर्स और यूरिन और एनी टाइप ऑफ एंटीजन. एंड उसके बाद एक सेकेंड एंटीबॉडी जिसको सेकेंडरी एंटीबॉडी कहते हैं वो ऐड की जाती है. एंड दिस एंटीबॉडी इज एंजाइम लिंक्ड, or that is detected. And in the third, the competitive ELISA. Competitive ELISA में क्या करते हैं कि provides another extremely sensitive variation for measuring amount of antigen. इसमें amount of antigen को हम like consider कर सकते हैं, like detect कर सकते हैं. Antibody is first incubated in the solution in a sample containing antigen. The antigen antibody mixture is then added to the antigen coated microtiter plate, microtiter well, and the more antigen present in the initial solution phase, the less free antibody will be available to bind to the coated well. After washing, the unbound is removed, or secondary antibody जो है वो specific to the isotype of AB1 can be added to determine the amount of antibody 1. So ये isotype जो है that is the FC region actually. So isotype तो उसकी जो पूरी स्पीशी में जो वो कांस्टेंट रीजन है उसको that will be the isotype. And in the competitive ELISA, the higher concentration of the antigen in the original sample, the lower the final signal is. We have talked about this in detail, so I don't want to like go into detail again. If you have any question, so अगर कोई question है, कोई comment है, बताएं. ठीक है, is clear? सर जो आइसोटाइप होती है वो हर स्थिति में जो सारी एंटीबॉडीज होती हैं उनका जो एफसी रीजन होता है उसको हम आइसोटाइप बोलते हैं. हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली. हर डिफरेंट स्पीशीज के डिफरेंट आइसोटाइप्स होंगे ना, डिफरेंट स्पीशीज में जो एंटीबॉडीज हैं उनके. हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल इस तरह. अच्छा, So competitive and non-competitive immunoassays are there. In competitive assay formats, unlabeled analyte in the test sample is measured by its ability to compete with the labeled antigen of the immunoassay. होगा कि कॉम्पिटिटिव में हम लेबल्ड और अनलेबल्ड, लाइक हमारे पास एंटीजन है तो हमने कुछ एंटीजन को लेबल करना है जो हमारे पास लेबल्ड पड़े होंगे, और कुछ अनलेबल्ड पड़े होंगे. इसको हमने रिया में वैसे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है. सो हमने दोनों को कंपेयर करना है. द मोर द लेबल्ड, द मोर द अनलेबल्ड, the less will be the fluorescence or like the detection. And non-competitive में क्या होगा, like in the sandwich immunoassays generally provide the highest level of assay sensitivity and specificity. इसमें specificity बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि जो एंटीजन है उसके दो एपिटोप्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है, लाइक इन द सैंडविच, ठीक है. सो आपने देखा होगा कि उसके दो एपिटोप्स को रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, मींस दो मुख्तलिफ एंटीबॉडीज जो हैं एक एंटीजन के दो डिफरेंट एपिटोप्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है. तो इसका मतलब है कि दैट इज मोर सेंसिटिव एंड दैट इज मोर स्पेसिफिक इवन एज वेल. सो द रिएक्शन मिक्सचर टिपिकली इंक्लूड्स एन एक्सेस ऑफ लेबल्ड एंटीबॉडी सो दैट ऑल metabolite is bound. The amount of antigen complex is then measured to determine the amount of analyte present in the sample, and the labeled antibody is directly proportional to the amount of antigen present in the sample. So
यहाँ पे क्या होगा कि जितना लेबल्ड एंटीबॉडीज जितने ज़्यादा हैं एंड उसमें क्या होगा कि उतने ही ज़्यादा एंटीजन मौजूद होगा, जितना ज़्यादा। तो ये जो है मेथड ये ज़्यादा सेंसिटिव है। यहाँ पे ये बात जस्ट मैं एक दफ़ा कर दूं कि यहाँ पे अगर आप देखें कि दिस इज़ व्हाई दिस इज़ कंसिडर्ड मोर सेंसिटिव। इस एंटीजन के 2 एपिटोप्स को कंसिडर किया जाता है। लाइक अगर एक एपिटोप भी रिकॉग्नाइज ना होना मींस के दोनों एपिटोप रिकॉग्नाइज होने चाहिए। ये एपिटोप इस वाले साइड वाला एपिटोप जो है ये इस एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेगा और दूसरा एपिटोप जो है वो दूसरे एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेगा। मींस द एंटीजन इज मोर प्रिसाइसली एंड मोर एक्यूरेटली रिकॉग्नाइज। अगर एक भी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तो ये वाली हमें डिटेक्शन नहीं मिलेगी। सो दिस इज मोर स्पेसिफिक लाइक इन दिस केस। इससे हम प्रिसाइसली क्वांटिफाई कर सकते हैं। यहाँ से इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है, लाइक फॉल्स पॉजिटिव हमारे पास कम आएंगे। एंड ओके, एंड अगर हम इसको देखें कॉम्पिटिटिव वर्सेस नॉन कॉम्पिटिटिव इम्यूनोएसेज को, सो यहाँ पे दिस इज द इमोबिलाइजेशन सरफेस एंड दिस इज द स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। सो कोटिंग हम कर लेते हैं एंटीबॉडीज को, इमोबिलाइज दिस सरफेस पे इमोबिलाइज कर देते हैं। उसके बाद जो है एंटीजन को ऐड कर देते हैं। तो एंटीजन को जब ऐड करेंगे तो उसमें क्या होगा कि कुछ एंटीजन जो है वो उसके साथ लेबल होगा, कुछ अनलेबल्ड होंगे। ठीक है, सो वो कंजुगेटेड एंटीबॉडीज जो होंगे लेबल के साथ। सो कुछ अब यहाँ पे देखें सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट दैट विल गिव अस प्रोडक्ट एंड दिस विल बी दैट विल बी मेजर्ड। अगर इसको हम इस तरह देख लें कि ये अगर इसकी जब कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी, लाइक ये कंसंट्रेशन अनलेबल्ड की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी तो सिग्नल उतना कम होगा। ठीक है, तो द मोर द कंसंट्रेशन ऑफ अनलेबल्ड द लेस विल बी द सिग्नल। मींस ये जितना आगे चलता जाएगा कंसंट्रेशन अगर अनलेबल्ड की कम है तो सिग्नल सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि जो लेबल्ड है वो ज्यादा बाउंड हो जाएंगे। ठीक है, एंड दिस इज अनदर रिप्रेजेंटेशन सैंडविच में एंटीबॉडीज बाइंड टू टू साइड्स ऑफ द एंटीबॉडी द एनालाइट। अब देखें ये एंटीजन है, एंटीजन के इस साइड पे ये वाली एंटीबॉडी बाउंड है, सेकेंडरी एंटीबॉडी विद द लेबल that is bound with the another epitopes of the antigen and that's it. सर ठीक है, इसमें हम सर इसमें कोई होता है कि हमने लेबल स्पेसिफाई करना होता है कि किसको करना है, जिसको हमने डिटेक्ट करना है, एंटीजन या एंटीबॉडी को? हाँ, तो जैसे ऊपर हमने एंटीजन को लेबल किया हाँ, और नीचे वाले में हमने एंटीबॉडी को लेबल किया। हाँ, ये असल में डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। मींस के उसको एंटीबॉडी को भी हम लेबल कर सकते हैं और एंटीजन को भी कर सकते हैं। एंटीजन में लाइक अगर हम इस तरह कर लें कि अगर हम एंटीजन को लाइक मेरे पास एक ब्लड सैंपल आया हुआ है, उसमें मैंने HCV को काउंट करना है कि HCV कितने हैं ना। सो मैं क्या करूँगा कि मेरे पास एंटीबॉडी भी तैयार कंपनी से आएंगे और एंटीजन भी मींस HCV पार्टिकल्स भी तैयार कंपनी से आएंगे जो लेबल्ड होंगे। अब मेरे पास लेबल्ड एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन है, सॉरी एंटीजन की कंसंट्रेशन नोन है। अब मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास सैंपल में पता चल जाए कि सैंपल में कितना है। सो अगर मेरे पास उसमें अगेन के 5 लेबल्ड मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, सो अनलेबल्ड अगर ज्यादा होंगे, अगर अनलेबल्ड जो सैंपल में मेरे पास एंटीजन ज्यादा है तो वो इसके साथ कंपीट करेंगे, वो ज्यादा बाउंड होंगे। ठीक है, सो लेबल्ड अगर वो है लाइक उसके कंपैरिजन में लेबल्ड कम होंगे, क्योंकि अगर सैंपल में ज्यादा हुए तो ये उसके कंपैरिजन में कम पड़ जाएंगे, तो हमें कलर कम मिलेगा। तो सिमिलर यहाँ पे अगर लेबल्ड हमारे पास सैंपल में अनलेबल्ड, सैंपल में तो अनलेबल्ड होंगे ना, तो वो उसकी कंसंट्रेशन जितनी बढ़ती जाएगी तो सिग्नल जो है जो लेबल्ड है जो ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं उसका सिग्नल कम होता जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज हाउ वी कैन डिटेक्ट। दिस इज इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, दिस इज डायरेक्ट रिलेशनशिप। सर यानी इसके थ्रू हम लेबल्ड एट अ टाइम हम लेबल्ड और अनलेबल्ड दोनों की कंसंट्रेशन एक नाउन सैंपल के अंदर फाइंड आउट कर। हाँ, हम इसको मिक्स करेंगे। ठीक है, लेबल, क्योंकि लेबल का तो हमें पता होगा ना कि इसकी कंसंट्रेशन इतनी है। ठीक है, तो सैंपल के साथ पहले हाँ, तो उसको दोनों को हम यूज करेंगे, मिक्स करके यूज कर लेंगे।
ठीक हो गया। सो अगर रिलेशनशिप जो है वो डायरेक्ट है तो इस तरह की लाइन हमें आएगी, शो नजर होगी कि सिग्नल जितना बढ़ता जाएगा तो कंसंट्रेशन जितनी बढ़ती जाएगी तो सिग्नल हमें देगा। यहाँ पे यहाँ के केस में कि एंटीजन जितना ज्यादा होता जाएगा तो द सिग्नल विल बी मोर। ठीक है, इस केस में कॉम्पिटिटिव में द इनडायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट रिलेशनशिप का साइन है दिस वन। ठीक है, एंड दिस वन इज फॉर डायरेक्ट रिलेशनशिप। इज इट यस सर। क्लियर? ठीक हो गया। यस सर। चले, एंड फिर जो है वो लेबल्ड टाइप्स ऑफ लेबल्ड इम्यूनो एसेस। टाइम क्या हो रहा है अभी? ओके, सो टाइप्स ऑफ लेबल्ड इम्यूनो एसेस जो हैं वो दो हैं। अब लेबल्ड इम्यूनो एसेस के दो टाइप्स हैं, एक होमोजीनस है, एक हेट्रोजीनस है। सो इम्यूनो एसेस मेथड दैट रिक्वायर्ड सेपरेशन ऑफ बाउंड एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स आर नोन एज हेट्रोजीनस इम्यूनो एसेस। सो जिसमें हम सेपरेशन कर रहे होते हैं ना, कि लाइक वॉशिंग जिसमें इन्वॉल्व है, सेपरेशन इन्वॉल्व है, वॉशिंग इन्वॉल्व है कि एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स को हम सेपरेट करें जो अनबाउंड है, तो उसको हम हेट्रोजीनस कहते होते हैं। Those that do not require separation are referred to as homogeneous. Since homogeneous method do not require separation of bound antibody antigen from the free antigen. तो हम इसमें जो होमोजीनस में क्या करते हैं, इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ हम ये फर्क रखते हैं कि एक में हमने क्या करना है, वॉशिंग स्टेप ऐड करने हैं, दूसरे में वॉशिंग स्टेप रिक्वायर नहीं होंगे। ठीक है, तो होमोजीनियस मेथड्स हैव बीन अप्लाइड टू मेजरमेंट ऑफ स्मॉल एनालाइट्स सच एज अब्यूज्ड और थेरेप्यूटिक ड्रग्स। सो जो एब्यूसिव ड्रग्स हैं या थेरेप्यूटिक ड्रग्स हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए होमोजीनियस मेथड्स ही यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, सो हेट्रोजीनियस मेथड्स में क्या होगा कि हमने वॉशिंग करनी है, हमने जो अनबाउंड एनालाइट्स हैं उनको रिमूव करना है पहले। ठीक है, ताकि सिर्फ बाउंड रह जाए और हम उनको डिटेक्ट करें, तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम हेट्रोजीनस कहेंगे। होमोजीनस में क्या होगा, हमें पता होगा कि एनालाइट्स जो है लाइक एंटीजन जो है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम है, तो अनबाउंड रहने के चांसेस ही नहीं है। ठीक है, तो उसमें हमें वॉशिंग की जरूरत नहीं पड़ती, उनको हम फिर होमोजीनस कहेंगे। समझ आ गई है? यस यस सर। सर एलाइजा की तीनों टाइप्स हेट्रोजीनस होंगी फिर इस हिसाब से? हाँ, एलाइजा के हेट्रोजीनस होंगे जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम उसमें भी वॉशिंग ना करें ना, लगे लाइक हमें पता हो कि लाइक हम किसी पर्सन में उसने थेरेप्यूटिक ड्रग्स लिए हुए हैं कि नहीं, या एब्यूसिव ड्रग्स लिए हैं कि नहीं लिए हैं। ठीक है, सो उसको डिटेक्ट करने के लिए लाइक डोपामीन लेवल हमने देखना है या कोई भी चीज़ देखनी है और वो बहुत ज़्यादा कम है, एनालाइट्स जो है कम है उसमें, तो हमें वॉशिंग स्टेप की जरूरत नहीं पड़ती उसमें। ठीक है, सो डायरेक्ट एंटीबॉडीज को ऐड करें एंड तो उसके साथ बाइंड हो जाएंगे और फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी यूज कर लें, दैट्स इट। ठीक है, या कुछ ये डायरेक्ट इलाइजा में होता है, मींस कि हम तो इनडायरेक्ट सैंडविच और उसमें डायरेक्ट इलाइजा में है कि एंटीबॉडी के साथ एंटीजन के साथ डायरेक्ट लेबल्ड एंटीबॉडी ऐड की जाती है। आगे जाके हम यही देख रहे हैं, फिर आगे जाके है ये चीजें। ठीक है, तो फिलहाल यही समझ लें कि जिसमें हम रिमूव करते होते हैं फ्री फ्रॉम द बाउंड वन, लाइक जो फ्री रह गए उनको हम वॉश आउट करते हैं, रिमूव करते हैं, तो उसको हम हेट्रोजीनियस कहेंगे। जिसमें हमें जरूरत नहीं पड़ती इसकी तो उसको हम होमोजीनियस कहेंगे। ठीक हो गया? एम आई यस क्लियर टू सर। द होल क्लास? यस सर। यस सर। यस सर। उमर अच्छा, शफीक आपकी आवाज, शफीक समझ आई आपको? यस सर। ओके, दैट्स गुड। ओके, ओके, एंड next is um, okay, so look at this antibody solid phase reagent, and ये अगर ये डिटरमिन करना है कि किसी सॉलिड फेज के साथ जो है एंटीबॉडी को बाइंड करवा
reagent आपकी फिर से एंटीबॉडी को आवाज नहीं रिएक्ट आ करवाया रही। गया है। ओके, अभी आ आपका रही है आवाज? कनेक्शन बीच में लॉस्ट हो गया था तो अब यस सर। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ओके ओके, दैट्स गुड। ओके, सो इसमें क्या किया जाता है कि एंटीबॉडी सॉलिड फेस के साथ लाइक अटैच करवाई जाती है। लाइक इन दिस केस इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, एंटीजन एंटीबॉडी इज बाउंड विद अ सॉलिड सपोर्ट, प्लस स्पेसिमेन को ऐड किया जाता है। Am I clear? Like, is there any distortion in my voice, or is clear now? नो सर, अभी ठीक है। ठीक है, चले। ओके, सो स्पेसिमेन को ऐड किया जाता है, मींस एंटीजन को ऐड किया जाता है, एंड देन लेबल्ड एंटीबॉडी को ऐड किया जाता है। लेबल्ड को स्टेरिक के साथ रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे। सो इन द होमोजीनस measure bound antigen antibody complex, so bound antibody antigen complex like उसको measure किया जाता है, and there is no need of separation। यहाँ पे क्या होगा होमो हेट्रोजीनियस मेथड्स में कि वॉशिंग स्टेप्स हैं, तो एंटीबॉडी बाउंड करवाई जाती है, उसके बाद एंटीजन, उसके बाद सेकेंडरी एंटीबॉडी, एंड देन आइसोलेट एंड वॉश। तो यहाँ पे आइसोलेशन एंड वॉशिंग स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इसमें, ठीक है, हेट्रोजीनस में। होमोजीनस में वॉशिंग स्टेप्स इन्वॉल्व नहीं है। होमोजीनस इज डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ बाउंड एंटीजन एंड एंटीबॉडी, एंटीजन एंड एंटीबॉडी को वो किया जाता है, दैट्स इट, ठीक है। सो इसमें इस तरह किया जाता है कि इस एंटीबॉडी को एंटीजन के साथ बांध के एंटीबॉडी के साथ सॉरी एंटीजन के साथ बांध करवाया जाता है। तो उसमें उसकी जरूरत नहीं होती, लाइक सैंडविच, जिस तरह सैंडविच में है तो इस तरह नहीं होता, वो डायरेक्ट ही हो जाते हैं। ठीक हो गया? इसमें यस सर। इसमें इस तरह होगा कि एंटीजन को बाइंड करवाया जाएगा एंटीबॉडी के साथ, एंड दैट्स इट। दिस एंटीजन एंटीबॉडी को साथ बाइंड करवा के वो हमें मेजरमेंट मिल जाती है। ठीक हो गया? एंड next is types of immunoassays. So there are several types of immunoassays within the categories of competitive and non-competitive, heterogeneous and homogeneous. There are specific types which include radioimmunoassays, RIA, enzyme-linked immunosorbent assays, ELISA, enzyme multiplied immunoassays techniques, so that is EMIT. So enzyme multiplied immunoassay technique, so that is EMIT. So affinity chrome mediated immunoassay, so ACMIA, and cloned enzyme donor immunoassay, and after that particle enhanced turbidometric inhibition immunoassay, and next is, and the last one is fluorescence polarization immunoassay. We will be studying these all these in detail. We are done with RIA, we are done with ELISA, and some of the details are also coming in the next coming slides. So RIA, we already are done with this, but this is some more explanation for the previous one. So RIAs that utilize radio labeled usually iodine 125, H3, C14. So इसमें ये radio labeling हम करते होते हैं, which emit radiations that can be measured is counts per minute. So CPM, counts per minute, with a beta or gamma counter. So ये जो हमें रेडिएशन मिलेंगे, हमने gamma counter यूज करना है या beta counter, like normally gamma counter is used, so that will like जो radiation emit होती है, so उसको like detect किया जाएगा with counter. Not commonly used nowadays because of waste disposal issue. तो इसका जो वेस्ट बनेगा मीन्स दैट इज रेडियो एक्टिव, सो रेडियो एक्टिविटी को लाइक डिस्पोजल इसके इश्यूज हैं, तो इस वजह से लाइक नाउअडेज पीपल डिस्करेज दिस टेक्निक. So known quantity of radioactively labeled analyte drug competes with the analyte of the sample. So यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि radioactive जो labeling है that will compete with the non labeled ones, and strength इसके क्या है कि they are sensitive, that is reliable. So sensitive or reliability जो है, those are the strengths of RIA. And limitation क्या है, shortcomings is special handling it required, because that is that could be carcinogenic, that could be so radioactive है, so that is hazardous. And disposal के issues हैं, इसको dispose of किस तरह किया जाए, so that's the problems are there. So अब अगर इस technique को देख लें,
in the diagram, the antibodies are added with the radioactive antigen. So the red one is the radioactive antigen. So they are bound with the antibodies first. So this will be the first antibody. उसके साथ radioactive antigen को add किया जाता है. After that, add unlabeled antigen. उसके बाद unlabeled antigen को add किया जाता है, and that unlabeled antigen will compete with the labeled ones. And after that, precipitate antigen antibody complexes, इसको precipitate किया जाता है with anti immunoglobulin second antibody. So इसको precipitate out किस तरह किया जाता है कि एक solid support के साथ ये वाली antibody bound होगी. ये हम कुछ different techniques में हम देख भी चुके हैं. ये प्राइमरी एंटीबॉडी जो इसके साथ बाइंड है वो यहाँ पे बाउंड हो जाएगी विद सेकेंड एंटीबॉडी. सो सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ बाइंड हो जाएगी, बाकी जो है वो वॉश हो जाएंगे. ठीक है, वो लाइक दे विल बी रिमूव्ड एंड वी विल डिटेक्ट द लेवल. सो अनलेबल्ड एंटीजन जितने ये ब्लू कलर वाले एंटीबॉडी जो एंटीजन जो है वो जितने ज्यादा होंगे तो उतना कलर हमें कम मिलेगा. मीन्स के ये ब्लू वाले जितने कम होंगे तो उतना ज्यादा हमें उतनी ज्यादा रेडिएक्टिविटी वी विल सी द रेडिएक्टिविटी मोर इफ दैट इज लो. एंड द हायर द नंबर ऑफ अनलेबल्ड एंटीबॉडीज एंटीजेंस, so the less will be the fluorescence. So the radioactivity actually. ठीक हो गया? यस सर. लास्ट वाली बात जरा दोबारा बता दो, कलर वाली बात. फ्लोरेसेंस कलर नहीं. अनाया? जी सर. सर आगे समझ आ गई. आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें इसको, आप अच्छा एक्सप्लेन कर लेती हैं. सर रेडियो इम्यूनोएसिस में हम रेडियो एक्टिविटी डिटेक्शन के थ्रू हम देख लेते हैं कि हमारा जो एंटीजन है उसकी क्वांटिटी कितनी है. इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम लेबल करते हैं एंटीबॉडीज को विद रेडियो एक्टिव एजेंट के साथ. उसको हम एंटीजन के साथ एंटीबॉडी के साथ उसको अटैच कराते हैं रेडियो एक्टिव एंटीजन को, और उसके बाद हमने उसमें ऐड कर देते हैं अपने जो अनलेबल्ड जिसके साथ रेडियो एक्टिव एजेंट नहीं है वो वाली एंटीजन जो है ना उसमें ऐड कर देंगे. वो एंटीजन जो है दूसरी जो लेबल्ड एंटीजन है उनके साथ compete करेंगी और फॉर द अटैचमेंट विद द एंटीबॉडी, और फिर वो उसके साथ जाके अटैच हो जाएंगे एंटीबॉडीज के साथ. और उसके बाद हम उसकी जो वॉशिंग आउट कर लेंगे और जो अनबाउंड एंटीजन्स थे चाहे वो रेडियो एक्टिव लेबल्ड है या फिर अनलेबल्ड है वो रिमूव हो जाएंगे. और उसके बाद हम ये जो हमारे पास जो एंटीबॉडीज हैं जिनके साथ एंटीजन अटैच्ड हैं वो किसी और सेकेंडरी एंटीबॉडीज के साथ अटैच्ड होंगी, और इस वजह से जब वॉशिंग करेंगे तो वो रिमूव नहीं होंगी वो वाली एंटीबॉडीज जो है. और इसमें हम देखते कैसे हैं कि जितनी ज़्यादा हमारे पास जितने कम हमारे पास जो है वो लेबल्ड एंटीजन अटैच्ड होंगे उतना ही ज़्यादा जितना ज़्यादा हमारे पास अनलेबल्ड एंटीजन होंगे उतना ज़्यादा हमारे पास जो है ना फ्लोरोसेंस उतना कम फ्लोरोसेंस आएगा, और जितने ज्यादा हमारे पास लेबल्ड एंटीजन होंगे उतना ज्यादा हमारे पास फ्लोरोसेंस आएगा. जब हम उसकी रेडियो एक्टिविटी देखेंगे ना उसके अगेंस्ट बीटा या फिर गामा काउंटर के अगेंस्ट, तो उतना कम हमारे पास फ्लोरोसेंस आएगा जितने ज्यादा हमारे पास अनलेबल्ड होंगे. इसमें जस्ट ये इसमें सिर्फ ये कंसीडर कर लें कि हमारे पास 2-3 सैंपल हैं. अगर ब्लड सैंपल आए हुए हैं और हमने उसमें सर लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा सा रिवाइज कर दें, ये थोड़ा सा कंफ्यूज सर कर आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है. हाँ मैं वही कर रहा हूँ. अभी ठीक है आवाज? हेलो, आवाज ठीक आ रही है अभी? यस सर. हाँ ठीक है. अच्छा, अब मैं वही डिस्क्राइब करने वाला हूँ कि अगर हमारे पास 2-3 सैंपल्स हैं, लाइक मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ, ओके, मेरे पास एक सैंपल है और उसमें एंटीजन जो है वो सैंपल 1 में एंटीजन जो है वो 10 है, सैंपल 2 में एंटीजन जो है वो 20 है. सो अब एंड सैंपल 3 में 15 है एंटीजन. ठीक है. सो अब क्या होगा कि ये 3 सैंपल्स हैं मेरे पास, इसमें मेरे पास एंटीजन की कंसंट्रेशन नो नहीं है. मैं वैसे ही एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ कि ये ऑलरेडी इसमें एंटीजन इतने हैं, 3 ब्लड सैंपल्स हैं और मैंने ये डिटरमिन करना है कि इसमें सैंपल्स इसमें एंटीजन लोड कितना है. ठीक है. मैं क्या करूँगा
कि I will have the antibody, I will have radioactive antigen as well. ठीक है, मैं दोनों को बाउंड करवाऊंगा. उसके बाद एक सैंपल को मींस के उस एक सैंपल के साथ ट्रीट करूंगा, सेकंड सैंपल के साथ एंड थर्ड सैंपल के साथ. ठीक है, अब आई हैव 3 vials. First one will have this antigen will compete with the labeled ones. This will also compete and the third will also compete. अब मैंने क्या किया कि I will have to precipitate the antibody, these antibodies with the secondary antibody, and will wash the unbound ones. And then we'll check the radioactivity with the gamma or beta counter. Now, if the antigen are more in the first case, antigen जितने मेरे पास ज़्यादा होंगे unlabeled antigen जितने ज़्यादा होंगे तो उतनी रेडियोएक्टिविटी जो है वो कम होगी. लाइक इफ दैट इज हियर, रेडियोएक्टिविटी यहाँ पे है. ठीक है, अब सैंपल नंबर 2 में मेरे पास एंटीजन ज्यादा है, तो रेडियोएक्टिविटी वो सैंपल नंबर 2 जो एंटीजन ज्यादा होने की वजह से रेडियोएक्टिविटी जो है वो यहाँ पे होगी. सैंपल नंबर 3 में रेडियोएक्टिविटी जो है जो एनालाइट्स है दैट विल बी द रेडियोएक्टिविटी विल बी लाइक हियर. ठीक है, तो इस तरह मैं कंपेयर कर सकता हूं कि जितने वो ज्यादा होंगे एंटीजन जितनी ज्यादा है, सो द रेडियोएक्टिविटी विल बी लेस because it will the antigen will compete with the radioactive antigen, and that's it. Is clear or not? जी. सर इसमें जो हमारे पास अनलेबल्ड एंटीजन है, जब वो लेबल उसके साथ compete करेंगे तो वो किस बेसिस पे अटैच कर जाएंगे उस एंटीबॉडी के साथ? आई मीन वो तो पहले से ही उसके साथ अटैच्ड है ना, जो लेबल्ड है. ओके, यू आर कंफ्यूजिंग दिस विद दिस ना. ये आप हम ये समझ रहे हैं कि हमने इसको इसके साथ पहले लेबल वो किया है और ये कंपीट किस तरह करेंगे. योर क्वेश्चन इज दिस? यस सर, वो जो लेबल्ड है वो पहले से एंटीबॉडी के साथ अटैच्ड है, उसके साथ अटैच्ड है. एक्चुअली इसको इस तरह किया जाता है कि इन एंटीजेंस को इसके साथ मिक्स किया जाता है पहले, और फिर एंटीजन के साथ एंटीबॉडी के साथ बाउंड करवाया जाता है. समझ आ रही है? सो इन दैट केस इफ दैट इज 20 और ये अनलेबल्ड जो है वो भी 20 है. ठीक है, सो मतलब उनकी बाइंडिंग साइट फ्री होगी वहां पे पहले से ही? हाँ एग्जैक्ट नहीं फ्री नहीं होगी, वो compete करेंगे एक दूसरे के लिए, और एग्जैक्टली दैट विल बी फ्री होंगे तो ही compete करेंगे दोनों. एक दफा एक बाउंड कर जाए तो दूसरा रिमूव नहीं हो सकता फिर. यस सर, यही मैं पूछ रही थी. ठीक है, तो जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, लाइक ये 20 है और लेबल जो है वो 10 है, तो 20 के पास अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं. they will bind more in comparison with the labeled ones. ठीक है, तो उस केस में फिर जो रेडियोएक्टिविटी है वो कम होगी because unlabeled has more opportunity for the competition in numbers actually. ठीक है, am I clear? Immunoassays that we need to know about is known as the EMIT assay. And EMIT stands for Enzyme Multiplied Immunoassay Technique. And if you've watched the other two videos, you notice that they're all referred to as immunoassays. The reason why is because all of them involve in some way or another antibodies, which are part of the immune system. This particular assay relies on enzymes. And there's going to be the target substrate. That's the chemical we're looking for, the poison or the drug that's in the sample. And it's going to be attached near the active site. Now, before we go into that, let's kind of review our enzymes. An enzyme is a protein that has a particular place on it referred to as the active site. The enzyme will act upon another chemical when that other chemical binds into this active site. The other chemical is what is referred to as the substrate. Now, in this particular assay, we're going to be using an enzyme and a substrate system such that when the enzyme and the substrate bind together, the enzyme causes the substrate to undergo a color change, and then it can be released. Now, because it's released, the enzyme can now bond another substrate molecule,
and do the same thing. And this can keep going on until we've run out of substrate. And the effect is, overall, if we keep building up these colored molecules, our entire solution is going to change color. That's what we're looking for. That indicates that the enzyme is working on the substrate. Now, the EMIT test actually requires that you attach the chemical antigen, that's the drug or the poison. You're actually going to attach that to the enzyme near the active site. So here's our enzyme again. And if we're testing for, say, poison A, we'll take a sample of poison A and we will chemically attach it near the active site. So that's the target antigen. That's either the drug or the poison or whatever we're looking for. We're attaching it right to here ahead of time. Okay? Then what we're going to do is we're going to add antibodies against this particular antigen, this particular drug or poison or whatever it is. And what's going to happen is that the antibody is going to bind to the antigen. That's what antibodies do. They bind to antigens. But in this case, because we've attached the antigen near the active site, the antibody, when attached, actually blocks the active site. So now our substrate can't actually fit. And since it can't actually fit, it's not going to change color. So when our antibodies are blocking our enzymes, we will not see a color change. So how does this actually work? Well, let's test someone who does not have the chemical, the drug, the poison, the antigen we're looking for. What we'll do is we'll start off with a sample. This is either their blood, their urine, whatever bodily fluid we're looking at. And what we're going to do is we're going to take and add our enzymes with that antigen present that we're looking for. Okay, we've added this stuff here. No color change. The second thing we're going to do is we're going to add antibodies against the antigens. And these antibodies will float around until it sees the antigen it's looking for. Well, it's going to see the antigen there, and there, and there. And you can see that all of the enzymes are being blocked by the antibodies. So when we add the substrate's got nothing to attach to. It can't attach there or there or there because all of the enzymes are being blocked by the antibody. So none of the substrate, no matter how much we put in here, can react with the antibody. And therefore, we don't see a color change. But what if we have a sample that does have our drug or our poison or our chemical, our antigen is present? So here's a person that actually does have the antigen present. Watch what happens in this case. We add our enzyme with our antigen attached to it. And now you see that the antibody can attach to either this, or this, or this, or this, or this, or this. There's a lot more places for the antibody to attach to. So once we add our antibody, you're going to see that some of the antibodies will attach to those antigens from our sample. And that takes away a lot of the antibodies, and only some antibodies will be left to block off the enzyme. So in this case, because we had the antigen in the system, it took away some of the antibodies that would normally block the enzyme. Now, when we add our substrate, you see that we've got some enzymes available to react. And in this case, these two free enzymes will actually cause a color change. And of course, these will come off and it'll react with more, and it'll eventually give us a color change. One important thing I want to note here is that the enzyme and the antigen attached to the enzyme and the antibody are all things that we add to the sample. These are not
part of the original sample. We add these things to test to see if there's any of our drug or poison floating around in solution. So let's take a look at what we can do here. We can actually have what are called quantitative results, and quantitative results means you can tell how much. Let's say we have 3 people. We take 3 different samples, and we're testing for, well, maybe we're testing for THC. That's one of the main drugs in marijuana. We'll add the enzymes with the marijuana antigens on them into all 3 solutions. Obviously, nothing happens because it's just the enzymes being added. And then we'll add the antibodies against that marijuana antigen to the system. And right now what's happening here is if any of these samples had the marijuana antigen floating around in solution, it's now attaching to the antibodies. And if there weren't any antigens to the marijuana floating around in the sample, then the antibodies are all attaching and deactivating the enzymes. So now when we add the substrate to these guys here, we can look to see what happens. In this case, person 1, there's no color change. That means there was no marijuana antigens floating around in this person's sample, which means all of the enzymes were inactivated, which means no color change. Person 2, we notice there is a slight color change. This means that some of the antibodies attached to the marijuana antigen floating around in this person's sample. So this person did have some marijuana antigens, and some were blocking the enzymes. And then the third one, we see a much darker color, or a much faster color change. This means that more of the enzyme was free, which means there was more of the marijuana antigen floating around in this person's blood. So we can not only tell if our drug or our poison is in the sample, but in some cases we can actually get a relative amount by how dark or how quickly the color changes. So that's the EMIT test. Hopefully this makes your notes on this particular immunoassay a little bit clearer and easier to understand. I think EMIT assay is clear. Could anybody or can anybody explain it for the rest of the class? सर समझ आ गया. कोई explain कर दें please. सर इसमें हमने सिंपली जो है ना एंजाइम्स के थ्रू हमने डिटेक्शन किया एंटीजेंस की के सैंपल में एंटीजन प्रेजेंट है कि नहीं. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एंजाइम का मैकेनिज्म जो उसका सिंपल मैकेनिज्म है वो ये है कि एंजाइम सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ बाइंड करता है और जिसकी वजह से वो कलर चेंज करता है और हमें कलर शो होता है, चेंज ऑफ कलर शो होता है. इसमें क्या था, हमारे पास 2 सैंपल होते हैं. जैसे कि हमने 2 सैंपल लिए हैं, एक सैंपल है जिसमें एंटीजन प्रेजेंट है और दूसरा सैंपल है जिसमें एंटीजन प्रेजेंट नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट सैंपल जिसमें हमने एंटीजन जिसमें अगर प्रेजेंट नहीं है, अगर उस सैंपल में जब हम एंजाइम डालेंगे जो जिनके साथ पहले से एक एंटीजन अटैच है, वो एंटीजन पहले सैंपल में डालेंगे और उसके बाद एंटीबॉडीज डालेंगे. जो एंटीबॉडीज हैं वो जाके जो एंटीजन एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बिल्कुल उसके पास ही साथ ही अटैच था, उसके साथ जाके एंटीबॉडी अटैच हो जाएगी, जिसकी वजह से वो उसकी जो एक्टिव साइट है उसको ब्लॉक कर देगी और जब हम सबस्ट्रेट ऐड करेंगे तो कलर चेंज शो नहीं होगा क्योंकि सबस्ट्रेट उसके अंदर फिट नहीं कर पाएगा. और ये वो वाला सैंपल है जिसके अंदर जो है एंटीजन जो है वो पहले से कोई भी ड्रग या पॉइजन या एंटीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं थे. लेकिन जब अगर कोई सैंपल है जिसके अंदर एंटीजन प्रेजेंट है तो उसमें क्या होता है, जब हम अपना एंजाइम विद एंटीजन डालते हैं तो जब हम उसके अंदर दोबारा से एंटीबॉडीज डालते हैं तो एंटीबॉडीज जो उसमें फ्रीली मूव कर रहे थे एंटीजन उनके साथ पहले अटैच हो जाती है और जो एंजाइम था उसके साथ अटैच नहीं होती. और जब हम सबस्ट्रेट ऐड करते हैं तो वो उसकी एक्टिव साइट के साथ जाके बाइंड करते हैं और कलर शो करते हैं. इसी तरह हम उसको क्वांटिफाई कर लेते हैं उसके कलर चेंज से. जितना कम कलर चेंज आता है, अगर बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं आता है तो उसका मतलब होता है कि सैंपल में जो एंटीजन है ना वो प्रेजेंट है, और अगर कलर चेंज शो हो रहा होता है तो इसका मतलब होता है कि सैंपल में एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, और उसके इसी तरह हम क्वांटिफाई कर लेते हैं. ठीक हो गया अनया. Somebody who could explain.
लाइक थोड़ा सा कोई अदर पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन अगर कोई कर दें। एक्चुअली इसमें इशू ये है कि जो हम लाइक व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट the antigen and the substrate, it looks that they may be similar or not. एंटीजन और सबस्ट्रेट सिमिलर होंगे या डिफरेंट होंगे? सर शेप तकरीबन सेम है, कलर तो चेंज है। डिफरेंट होंगे सर। They will be different. They will be different. We will be talking about that. They will be different. If you can, if we can revise this video, you will see that they are different. But how they are different and how they are similar? Actually, if we have some example, like in case we have 3 samples of hepatitis C virus, and we want to know the 3 samples, either they are virus infected, either the sample is virus infected or the patient is virus infected or not. And we want to see what is the viral load, like one have 10,000 viral load and the other one has 100,000 viral load. So how we can compare both in like EMIT assay. So EMIT is a very wonderful tool to compare the two. Like in this assay, once we get the sample, we will add the substrate and the substrate the enzyme, and if there are and then we will add the antibodies. So the antibodies, they will bind to the antigen, and they also have the affinity for to bind with the enzyme as well. How the antibodies then bind and they inactivate the enzyme active site. So if we can see in detail how what makes the difference, let's see in detail. If you can see this diagram here, in the first one, in the upper panel, in the presence of free drug or free antigen, what will happen? The substrate will bind here in the active site, and it will produce the product, and that's it. And if there are more antigen present there, all of the antibodies will be bound there, and they will not be available to block this thing. But in the absence of free drug, if the antigen is not there, means the viral load is not there, or the drug, what we say, the drug is not there, so the antibody will bind with this thing. These two will be the same. These two, the haptin and this drug, or the two drugs will be the same. Like if we want to check the antigen of HCV, like HCV core. सर हेपेटिन हमने जो एंजाइम डाला है उसके साथ खुद अटैच करवा के वो उसमें सैंपल में डाला हुआ है। जी सो नहीं, इसको डिस्कस करते हैं। इसको लाइक if there is no antigen, if there is no antigen, the antibody will bind this one. So that means this and this thing, they will compete for the antibody. So if antigen is more, the antibody, it will be, the more probability is there that the antibodies will bind there, and more of the enzyme will be free. But if the antibody binds here, it will block the pocket, the active pocket. It will block the active pocket. So that means the antibody will not bind with the enzyme, but it will bind with the antigenic site that has been created and bound with the enzyme actually. And if you can see enzyme with the target substrate attached near the active site, so the target substrate, so they will attach near the active site where the substrate could not bind there. Then if we can see again in detail, in more details, in enzyme multiplied immunoassay, the drug in the sample and the drug labeled with G6PD enzyme compete for antibody site, for binding site. So that will mean the same drug that has been bound with this enzyme. If you can see the drug in the sample, so this is the drug in the sample, and the same drug also could be bound with this.
So that means if you want to detect HCV, so the same epitope should be bound with this enzyme. So now we have like, if I could draw, if we have 3 tubes and like 3 samples, and these 3 samples, we want to find coronavirus antigen. What we will do? First, we will add, we will have the sample first, and that sample, we do have the sample. We will have the sample in all these 3 tubes. And now we want to find out that which of the sample is positive for corona. So this is first, this one is second, and this one is third. So now we want to see which one is positive for coronavirus. So what we will do, we will add, and now we have the sample, we will add, what we will add? We will add the enzyme with antigen डालेंगे. Yes, okay, yes. We will add this thing, enzyme, and that is bound with this antigen, and that has active site for the substrate. Now we are not going to add the substrate at this stage. We will add the enzyme in all 3 samples. Then, then we will add antibodies as well for that for coronavirus, antibodies for coronavirus. So this enzyme will have this antigen, this antigen and this antigen will be the same. Like we will add an antigen for the coronavirus. Like if we are using specific type of antibodies, and these specific type of antibodies has recognition for the coronavirus core protein or the coronavirus polymerase protein. So we will use a polymerase epitope here, and this antibody is for coronavirus now. So we will add antibodies there as well. Now the antibodies will bind with the coronavirus polymerase there. So if there are no virus, this antibody will be free, and this antibody will bind with this antigen because this is the same epitope. It will bind here, and then we need to add the substrate. Now by adding the substrate, it will bind here, and this will be empty, and the product will be, we get the product, and that will give us color. So we will get the product. Now in the second stage, in this sample, if this antibody is bound there, so this will not be free. If there is antigen, this will not be free, and if this is not free, this will be free. Now this pocket will be free, but if this is not free, the pocket will be so if this is free, it will bind there, and the pocket will be like covered, like it will not be available for the substrate, and it will not give us color. So in this case, it will not give us color. But if this is if there is more antigen, more antibodies will bound there. Antibodies will not be available to bind here, and now the pocket will be empty, and it will produce a product. So we can, like, we also already we have checked in the video. So the more the drug, the more will be the color, because the more active sites will be available for the substrate. Am I clear? Yes, sir. So next to it is, so ये दोनों चीजें जो हैं ये सेम होंगे, ठीक है? Okay, sir. And सर ये G6DPH क्या है? कहाँ पे? G6D
ये देखें नीचे लिखा हुआ भी है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज है, ये एंजाइम है, इसने कन्वर्ट करना है. ओके सर. Okay, and it is homogeneous type assay, therefore does not require separation. Means agar ye if this is heterogeneous, at every step we will bind antibodies and we will wash, and then we will bind secondary antibodies, and then we will wash, and then we will bind tertiary antibodies, for instance, and then washing. We don't need any washing at any step here. So if we don't need washing, that will be called as homogeneous type. So EMIT assay is a homogeneous type assay. Is it clear? Yes, sir. Okay, and next is binding inhibits enzyme activity while free enzyme remain active to interact with the substrate. We have already discussed this thing. Active enzyme convert NAD to NADH. It will reduce NAD and resulting in the change in the absorbance, which is measured photometrically. Is it okay? And enzyme activity and absorbance is directly proportional to drug concentration. So how we will know the activity of enzyme, like how we can like measure the color. Sir, we will measure it by absorbance. Yes, and sir, we will उसका have photometer different, है. yes, exactly, and we will have different wavelengths for that. ठीक है? Should we go further? Yes, sir. Yes, sir. Okay, and next is this is another perspective of the same EMIT assay. And if you can see, we have antibody, we have enzyme with the antigen and glucose 6 phosphate, and now what will happen? And we don't have like antigen. So the antibody will bind with this with this antigen that has bind with the enzyme. So it will not reduce NAD plus. But if the sample has more and more antigens, what will happen? If it has more antigens, सर वो फिर enzymatic reaction होगा. Yes, exactly. So antigen antibody की binding हो जाएगी. So the antibody will bound there, and they will not be available to block the active site, and the enzyme will be active then, and that's it. So this is another representation of the same thing. Am I clear? Should we go further? Yes, sir. Yes, sir. Okay, and now we have Affinity Chrome mediated immunoassay. Chrome is for chromium, actually. It is derived from chromium, and chromium is it has properties. It has magnetic properties. So that will be free and drug-bound antibody. Enzyme conjugates are separated by use of magnetic beads particles. So in this assay, we will be using magnetic beads. So we will be using magnet, actually the properties of magnets. So this will be ACMIA, and this is also abbreviation for antibody conjugate magnetic immunoassay, antibody conjugate magnetic immunoassay, or affinity chrome mediated immunoassay. They are the same thing. So the sample and antibody enzyme conjugates are mixed. So first we need to mix and to add antibody enzyme in the sample. So the enzyme will be bound with the antibody. So this is the conjugated antibody. Enzyme will be bound with the antibody, and we will add conjugated antibody in the sample, and then magnet beads coated with known concentration of analytes are added to bind free antibody enzyme conjugate. So we need to know either how much of the antibodies are free. This is the same case. We want to know the viral load in a sample. So we will use specific amount of
a specific concentration of antibodies. So on the magnetic beads, so if we use 100 magnetic beads and we get color from the 100 magnetic beads, that will mean that the concentration is more. But if we use 100 magnetic beads and we detect 50, so that will mean there are 50 free antibody enzyme conjugates. Means the sample has less antigen. It will be like inverse proportion. Like if you can see enzymes used, so we will discuss in detail, don't you worry for that. Enzyme used are, so in here the enzyme could be beta galactosidase. And what beta galactosidase will do, it will catalyze the hydrolysis of yellow colored CPRG. This is chlorophenol red beta galactopyronoside. So it will have initially yellow color. This is a substrate for beta galactosidase. So beta galactosidase will work on CPRG, the yellow color compound, and it will convert it into a red color CPR, and that is chlorophenol red and galactose. So if there is CPRG and if there is beta galactosidase available, so it will convert yellow color into red color, and we will detect the conversion and the activation of this, the activity of this enzyme actually. And if we use, CRP, now we have red color, so CPR absorbs light at 577 nanometer, and so the absorbance, we will detect absorbance at 577 nanometer, and this absorbance is directly proportional to the concentration of analyte in the sample. So the more the analyte, the more will be the concentration. So the more will be the absorbance, but less will be the antigen actually in the sample. And HRP, so this is another enzyme, horseradish peroxidase, and it will catalyze the hydrolysis of TMB reagent. This is a reagent and hydrogen peroxide. So this is the substrate actually, the HRP, and this is the substrate. It will hydrolyze this, and which absorb, and the product will absorb light at 450 nanometer, and we will detect that at 450 actually. So this will be at 577 nanometer, and this will be at 450 nanometer. And if you can see this again, the same thing. These are the beads, the Dyna beads anti-IgG. So these are the beads. The sample has been added with that. And once the sample has been added, these are mixed. They will bind with the antigen and the free antigen. So, so after that, the enzyme will be added, and the enzyme is actually conjugated with the antibody. So that will be added then. So now what will happen? The conjugated antibody will bind with the Dyna beads antibody containing the antigen. So and after that, washing will be done, and we will use magnet. By using magnet, all of the Dyna beads will bind with the magnet, will attracted with the magnet, and then TMB reagent will be used, because the enzyme, this, if you can see here, the HRP, horseradish peroxidase, the substrate will be TMB, hydrogen peroxide. So by using TMB reagent, it will be converted into the product. The substrate will be converted into products, and then we need to inactivate the reaction by adding hydrogen, by adding HCl,
hydrogen HCl or H2SO4 even. We can use the H2SO4 or HCl. So by adding that, we will inactivate the reaction, and then it could be detected at 450 nanometer. Am I clear? Yes, sir. Could Yes, somebody explain it? सर sir, डायनाबेट्स के साथ जो एंटीबॉडीज लगी होंगी वो एंटीजन के साथ बाइंड आउट करेंगी ना? Yes, yes. और इसके Exactly. अलावा जो दूसरी वाली होंगी वो एंजाइम के साथ बाइंड आउट करेंगी और अल्टीमेटली ये सारी आपस में बाइंड आउट करेंगी. हाँ, जो दूसरी एंटीबॉडी जब हम यूज करेंगे उसके साथ ऑलरेडी एंजाइम लिंक्ड होगा. यस सर. उसके साथ एंजाइम लिंक्ड होगा और उसने एंटीजन के साथ बाइंड करना है. और मैग्नेट का काम क्या है कि हम सिर्फ ये वॉशिंग कर सके. अच्छा क्लास ये देख लें कि इट कंटेन्स वॉशिंग स्टेप. So yes, it sir, will ये be heterogeneous. who will explain this diagram? सर मैं करूं? जी दुआ जी प्लीज. सर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, हम लोगों ने डायनाबीट्स लेने हैं, हमने उसे अपने सॉल्यूशन में डाल देना है. उसके बाद हमने एंटीजन इसके अंदर डालने हैं, हमने अपना सैंपल इसके अंदर ऐड कर दिया. अब जितने तो एंटीजन हैं हमारे पास रिक्वायर्ड, वो उतने हमारे एंटीबॉडीज के साथ बाइंड आउट हो जाएंगे. जो अनबाउंड होंगे उनको हम वॉशिंग करके निकाल देंगे. नीचे हमारे पास मैग्नेट लगा हुआ है जिस तरह डायग्राम में दिखाया है, क्योंकि वो डायनाबीट्स हैं तो वहां पे जाके स्टक हो जाएंगे. अब उसके बाद जो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम दोबारा एंटीबॉडी ऐड करेंगे जिसके साथ हमारा एंजाइम अटैच होगा. जब हम उसे ऐड करेंगे, जितनी एंटीबॉडी उस एंटीजन के साथ बाइंड आउट कर जाएगी ठीक है, और जितनी अनबाउंड होगी उसे हम वॉश आउट कर लेंगे. जब एक दफा इन दोनों की बाइंडिंग हो गई तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे हाइड्रोजन परऑक्सीडेज एंजाइम है ना, तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड की ऑक्सीडेशन करेगा, तो इन रिजल्ट आपके पास कलर प्रोड्यूस होगा. तो सबसे पहले हम H2O2 अपने सैंपल के अंदर हम लोग ऐड कर देंगे. अब जब ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन होने के बाद कलर प्रोड्यूस होगा एट द एंड, और फिर वो हम उसकी एब्जॉर्बेंस वहां से ले लेंगे. ठीक हो गया. ये हॉर्स रेडिश परऑक्सीडेज है, TMB रिएजेंट और ये दोनों यूज होंगे. एंड नेक्स्ट इज, और इसको इनएक्टिव करवाएंगे एसिड के साथ, किसी एसिड के साथ, और फिर डिटेक्शन होगी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे. एंड रेस्ट इज वेल डन, गुड. अब नेक्स्ट क्या होगा कि and this is known as affinity chrome mediated immunoassay, ACMIA, or antibody conjugated immunoassay, conjugated antibody conjugated magnet immunoassay भी कहेंगे. ठीक हो गया. And next is CEDIA, means cloned enzyme donor immunoassay. Cloned enzyme. So as the name explains, the enzyme needs to be cloned, or it will be a recombinant enzyme. Is it clear? Yes, sir. पाकिज़ा समझ आ रही है आपको? सर ये एक बार दोबारा बता दें. जी जी ठीक है. अजीम है? You there? Okay, अनाया देखें, cloned enzyme donor immunoassay. As its name indicates, there needs to be, the enzyme needs to be cloned, and this enzyme, that will mean it is a recombinant enzyme, and something donor, like it will have some donor and acceptor properties, like cloned enzyme donor. So the donor that will be cloned, so a cloned enzyme donor immunoassay. So, and CEDIA. So what is this actually? That will mean we will have two parts of the enzyme will be divided into two parts. The first one will be called as like we will call it as the enzyme, the first part of the enzyme will be called as donor. The second part will be called as acceptor. In case we have an enzyme, like it starts from this is from N terminal,
and this is C terminus. So the enzyme usually, what is done, the enzyme has been divided into two parts, and these two parts, one is called donor, the other one is called acceptor, and these two parts are cloned in different vectors and they are used separately. So, and the acceptor will be bound with the antigen. So now what will happen? If there are antibodies in excess, the antibody will bind with the antigen, here expressed on the acceptor part, here expressed with this part. So it will bind here and it will not allow the donor to bind. Same, if there are if the antibodies are less in concentration and the antigen are more, so what will happen? The donor will find its place and it will bind with the acceptor. Now the donor and the acceptor, when they bound together, they will form a complete enzyme and a complete active enzyme. Now this enzyme is active. It will convert substrate into products. So and it will have its binding site and it will convert substrate into product once these donor and acceptor parts are bound. If you can see this diagram, so that means initially the enzyme has been divided into two parts, the enzyme D for donor, ED, and this is the enzyme A for acceptor, EA. And if when in a solution, these two ED and A bound together, that will mean the enzyme is now active. It will convert the substrate into product. Similarly, okay, so now if you can see in the presence of free drug, when there are more free drugs, the antibody will not be available. It will bound with the drug because the drug is more, or same is the antigen is more, the antibody will bound here and it will not be available to block these two components from binding. But if there is less antigen in the sample, the more will be the antibodies. The antibodies will bind with the component here that has been made recombinant. It will bind here and it will not allow the one of the component to bind with the other. If you can see, so here you will see no enzyme activity, and here the enzyme is active because the both components bind together to form an active enzyme. And if we go further, so the cloned enzyme, so please try to understand this on this slide. You will get my point. You will get me. Cloned enzyme donor immunoassay, recombinantly produced fragments of beta-galactosidase are used. So in CEDIA, two fragments of beta-galactosidase are used. And what beta-galacto? Okay, so these two fragments, the EA, the enzyme acceptor, and the enzyme donor, they are inactive, but spontaneously reactivate to form fully active enzyme. Reassociate. They will bind to form an active enzyme. And one fragment, the ED, the donor one of the enzyme, is linked with the analyte, and that will be bound with the analyte, and the analyte in the sample competes with the analyte conjugated to the enzyme fragment for the binding to the antibody. So the analyte in the sample compete with the analyte conjugated to the enzyme. So if you can see, the analyte present in the sample will compete with the analyte bound
with the enzyme. So that means these two analyte must be same. This will be like if I want to detect HCV in a sample, so the antigen should be same for both. These two antigen will be same, or we can call it analyte. So they will be same because the antibody has to compete for the antigen, or these antigen will have to compete for the antibody, and that's it. And next is in the absence of analyte in the sample, antibody binds to conjugated analyte, and the two fragments can't reassociate, and thus no enzyme activity. So if there is no analyte in the sample, here you can see there is no analyte in the sample, there is no activity. But if analyte is more, you will observe the activity. So and next is when analyte is present in the sample, the antibody binds to it, and the two fragments reassociate to form active enzyme, and the activity could be observed. And next is active enzyme converts its substrate to color product, and the amount of active enzyme is directly proportional to the concentration of analyte in the sample. So more the analyte, more will be the active enzyme. Here you can see more the analyte in the sample, more will be the active enzyme. So the proportion is direct here. And this is another perspective. Okay, so this is another perspective of the same thing. Here the ED competes for the analyte, the antigen on the ED. So here the antibody will bind with the ED, and it will not allow the ED to bind with the EA. But here, if the antigen is more, it will bound with the antibody, and ED is available. Now the ED will bind with the EA, and now you can see here this is actually beta galactosidase, and we have already talked about chlorophenol beta D galactopyranoside. That will be converted into a red product because this is yellow, and by activation of this, it will convert this into a red product. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So who will explain? सर मैं करूँ explain? Please करें. सर इसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये जो क्लोन एंजाइम डोनर अमीनो एसिड है, इसमें एंजाइम जो है उसके दो फ्रैगमेंट्स है जो कि रिकॉम्बिनेंटली हमने इसको रिकॉम्बिनेंट एंजाइम है बीटा ग्लाइकोसाइडेज, उसके दो फ्रैगमेंट्स हैं, एक ईडी है और एक जो है वो ईए है. ईडी मीन एंजाइम जो डोनर है, एज अ डोनर एक्ट कर रहा है, और ईए जो एक्सेप्टर एक्ट कर रहा है. सबसे पहले जो हमारे पास जो एंजाइम जो ईडी है उसके साथ हमारा जो एनालिट है वो अटैच होगा, जो कि एंटीजन हो सकता है, कोई भी ड्रग या पॉइजन हो सकती है, वो उसके साथ अटैच होगा. और उसके अंदर जब हम एंटीबॉडीज जब दोनों फ्रेगमेंट्स हैं वो अभी जो है वो सेपरेट है, ईडी और ईए, और जो ईडी वाला फ्रेगमेंट है उसके साथ हमारा एंटीजन जो है वो अटैच है. और उसके बाद हम उसके अंदर जब एंटीबॉडीज डालेंगे, अगर तो सैंपल के अंदर पहले से ही एंटीजन प्रेजेंट है, कोई भी ड्रग्स या टॉक्सिन जिनको हम डिटर्मिन कर रहे हैं, अगर वो सैंपल में प्रेजेंट है तो एंटीबॉडीज जो है वो उनके साथ जाकर बाइंड कर जाएंगी, और जिसकी वजह से वो उसकी जो एक्टिविटी उसको एंजाइम की एक्टिव साइट है उसको ब्लॉक नहीं करेंगे, और एंजाइम ईडी और ईए जो है वो आपस में रीएसोसिएट करके कंप्लीट एंजाइम बना लेंगे, और वो फिर सबस्ट्रेट जब आएगा तो उसको कन्वर्ट कर देंगे प्रोडक्ट में, और कलर चेंज हमें जो है वो शो होगा.
तो ये उस केस में जब हमारे पास जब सैंपल में पहले से ही एंटीजन प्रेजेंट है, लेकिन जब एंटीजन जिनको हम डिटेक्ट कर रहे हैं अगर वो सैंपल में प्रेजेंट नहीं है, तो फिर हमारी जो एंटीबॉडीज को जब हम उसको जब हम सैंपल में डालेंगे तो जो एंटीबॉडीज हैं वो एनालिट के साथ जाके अटैच कर जाएंगी, उस एनालिट के साथ, उस एंटीजन के साथ जो कि ईडी एंजाइम के उस फ्रेगमेंट के साथ जो एंटीजन अटैच थी उसके साथ जाके अटैच कर जाएंगे और उसको रीएसोसिएट नहीं होने देंगे ईए के साथ, जिसकी वजह से वो कंप्लीट एंजाइम नहीं होगा और उसकी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी अपनी वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इसका डायरेक्ट अगर कलर चेंज शो होगा तो इसका मतलब यह है कि जो सैंपल है उसके अंदर एंटीजन प्रेजेंट है, जितना ज्यादा कलर होगा उतना ज्यादा एंटीजन प्रेजेंट होगा, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर कलर चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब जो है सैंपल में जो है वो एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक हो गया, okay, so what is meant by donor and what is meant by acceptor? There are actually the two domains on the enzyme. Enzyme के दो domains हैं, आप bioinformatics में पढ़ेंगे what is the difference between domain and motif, we will study there. But here you need to understand there are the two different domains, like the donor and the acceptor. There are two different domains on the enzyme. Sequence होता है enzyme का, तो वो conserved domains होते हैं. So they are actually derived from that concept. Okay, and next is types of immunoassays. Next है particle enhanced turbidometric inhibition immunoassay, and this is actually based on light scattering particles. They are created to measure the drug, and how it will measure the drug. So again. Particle enhanced turbidometric inhibition immunoassay. So there needs to be some particle that will enhance and turbidometric inhibition hogi isme, and that is an immunoassay that will use antibodies. So non-particle bound drug in sample compete with known quantity of latex particle bound drug. So one drug will be unbound and the other one, so you can see this is antibody coated latex particle and this is unbound drug, so CRP, so interacting antibodies is there. So Kinza, you raise your hand. Okay, so non-particle bound drug और latex ये इसके साथ जब bind करेगा या free होगा, so उसके competition में that competition will be that will be measured actually. The unbound will be measured. So binding particle bound drug to specific antibody result in the formation of insoluble aggregates. So particle bound drug जब specific antibodies के साथ bind करेंगे, so what will happen? This will form aggregates. They will form aggregates, and these aggregates will be like, they will be insoluble, and the rate of aggregate formation is inversely proportional to the drug in the sample. So the more the aggregates, there will mean that will mean less is the drug actually, or less is the antigen. Fatma? Sir, non-particle bound drug नहीं समझ आया. Okay, here this is there will be particles, latex particles. Latex particles होंगे, उनके साथ bound होंगे antibodies, and these antibodies will interact with the secondary antibodies, and these antibodies will also bound with the so there will be a drug that will bind with this. So if this is more, if drug is more, so that will remain unbound, and the antibody will bind, the other antibodies will bind with this one, and that will make aggregates. जब aggregates बनाएंगे, सारे aggregates जो हैं, they will settle down, and the remaining free will be they will be like detected.
So the more aggregate formation is inversely proportional to the drug. So if there is more drug or if there is more antigen present after aggregation, that will mean that will mean that is inversely proportional to the drug actually, aggregate formation. So that will mean there is more drug. Who will explain this? सर मैं करूं? जी please. सर इसमें Sir? हमने एंटीजन की जी फातिमा अनाया एक मिनट वेट करें फातिमा. सर मुझे ये पूछना है, अगर एग्रीगेट ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि ड्रग कम होगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. जी बिल्कुल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो सेकंड वाली में हमारे पास एग्रीगेट ज्यादा है तो मतलब ड्रग का सैंपल कम है. यस एग्जैक्टली. ओके सर. जी अनाया. सर इसमें हम जो ड्रग की डिटेक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेटेक्स पार्टिकल जो कि बाइंड की हुई हैं एंटीबॉडीज़ के साथ. सबसे पहले हम सैंपल के अंदर जिसके अंदर हमारे एंटीजन या फिर जो ड्रग है वो प्रेजेंट है उसके अंदर हम डालेंगे एंटीबॉडी जो कि लेटेक्स पार्टिकल्स के साथ बाउंडेड है. और वो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो जाके फिर वो अटैच करेंगे उन एंटीजन के साथ अगर सैंपल में प्रेजेंट है तो. और उसके बाद हम उसमें इंटीग्रेटिंग एंटीबॉडीज़ डालेंगे जो कि एज अ एंटीबॉडी एक्ट करेगी. और वो जाके अगर फ्री बाइंडिंग साइट है एंटीबॉडीज़ के पास तो वो उसके साथ अटैच करेंगी. अगर उसके साथ पहले से ही एंटीजन अटैच है तो जाहिर सी बात है उसके पास एंटीजन बाइंडिंग एंटीबॉडी के साथ कोई पास उसके बाइंडिंग साइट नहीं है तो उसके साथ अटैच नहीं करेंगी. और जितना ज़्यादा और जब वो इंटीग्रेटिंग एंटीबॉडीज़ के साथ जाके बाइंड करेंगी तो वो फिर एग्रीगेशन बना देंगे. और जितनी ज़्यादा एग्रीगेशन होगी उतना ही कम हमारे पास ड्रग की जो अमाउंट है वो सैंपल में होगी. और अगर ये इनवर्स रिलेशनशिप है, अगर एग्रीगेट्स कम होंगे तो इसका मतलब है कि ड्रग की अमाउंट ज़्यादा होगी. Okay. Actually, I think there is, this thing is much more clear. Wait for a while I reply to Zain. Okay, so I think there must be a video for this, but I couldn't find video. Like it is necessary to. So how we will determine the turbidity. By determining the turbidity assay, we will find the amount of the drug in the sample. So the turbidity will be, so if we will pass light from that and we will find turbidity, the more the turbid, that will mean more aggregates, and that will mean less is the drug. Is it clear? सर एक और बात कि हम इसमें सिर्फ so if when less is when more is drug, aggregates will be less and there will be less turbidity. जी अब पूछें प्लीज. सर इसमें ये होगा ना कि हम सिर्फ क्वांटिटी चेक कर रहे हैं, हम इसमें प्रेजेंस नहीं चेक कर रहे एंटीजन की. हाँ इसमें हाँ एग्जैक्टली ये असल में हम दिस इज कॉम्पिटिटिव essay and we will determine the quantity. Actually we are actually are interested to find the quantity. Quantitatively we want to determine the drug, the content of drug in a sample or antigen in a sample. Am I clear? Yes sir. Okay. Yes, sir. And next is a fluorescence polarization immunoassay. And a fluorescent molecule is used as a label instead of enzyme. So here a fluorescence molecule is used as a label. So so if you can see the antigen has been added with the label. Previously the antibody was conjugated with fluorescence, but here the antigen has been, the AG is antigen, the antigen has been associated with the label. And the drug in the sample that competes with the fluorescein labeled drug for the antibody binding site. So the drug will compete with the fluorescence, and the drug will compete with the drug for the antibody binding site.
and the reaction is excited by plain polarized light. So after binding with the antigen, so this fluorescence will need to be excited first. As the trace returns to lower energy state, it emits light, and the measured polarization value of the sample is inversely proportional to the analyte concentration. So now, if there are more antigen, so if there are and they compete for the normal antigen, so there will be two types of antigen, one with having the labels, other with that don't have the labels. So if there are more antigen, unbound antigens, so if there are more unbound antigens, what will happen? We will pass the polarized light, and the polarized light will move it more. It will rotate in a fast manner. It will this speedy rotation will be there, and when and it will the light will be depolarized. Means that will be like active. So when the antigen is bound with the antibody, and when polarized light is passed over it, it will rotate, it will slowly rotate, and that is bound with the receptor actually. So the antibody or the receptor, so the rotation is slow, and the light will be polarized. So the polarized light, so by having polarized and depolarized, the difference will make detect the concentration. So the measure polarization value, so how we can measure? So its rotation will be fast, its rotation will be slow. By fast rotation, it will produce low millipolarized value. So fast rotation, millipolarized value, MP value will be less. Slow rotation, that will have high MP value. So मतलब ये भी inversely proportional हुए ना दोनों? Yes, ये inversely proportional. So this will also be inversely proportional to the analyte concentration. जी. सर इसमें receptor molecule क्या है? Receptor molecule is actually here, the receptor could be the antigen. Antigen or antibody? Sorry, antibody. Okay, sir. ठीक है. So like antibodies के साथ attach हो जाए, या कोई receptor molecule, receptor is a general term that will receive or that will bind with this antigen. ठीक है. Or that will have affinity for the antigen, for this antigen. So again, it will be inversely proportional. And next is that this fluorescence polarization immunoassay. So this is fluorescence polarization immunoassay. So this uses fluorescently labeled analogs rather than the labeled antibody. We have talked about it. When labeled analog is unbound by the antibody, it is free to rotate. So in unbound state, it is free to rotate, and there will be low polarization of light. So if you can see, free to rotate, low polarization. And when the labeled analog become bound to the antibody, its rotation is slowed by the mass of the antibody, because the mass of the antibody will be more, so the rotation will be slow, and there is increased in polarized light. So the polarized light will be increased. So here high MP value is here. And next is immunoassay results. There are two types of we need two things in immunoassays, or we want two types of results from the immunoassay. First is qualitative. Qualitative is single point calibration at specific cutoff. We need to have a specific cutoff, like हमारे पास एक value आ जाए 1 तक,
तो हम कहते हैं कि 1 से ज्यादा अगर वैल्यू है तो उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, 1 से अगर कम है so we will consider that as negative. And that cutoff value varies from ELISA to ELISA and from experiment to experiment. That depends. So we need to decide a cutoff, and above the cutoff, like I say, if if a cutoff value, I decide a cutoff value as 0.5. So below 0.5, like if that is 0.4, I will say the below 0.4 color is like that will be noise or background color. But if that is 0.6, I will say that sample is positive for in ELISA. And next is, so that is qualitative. So yes, yeah, no, possibly false, positive. Okay, and next is false positive. Monoclonal antibodies restrict this slightly. So there will be more false positive. False positive का क्या मतलब है? False positive का ये मतलब है कि we detect color in ELISA and we consider it positive, but in fact that is negative. That is not positive. Like a sample, we got a sample and it has some value of 0.5, and we considered that positive, but we again detect that as negative and we revalidate as negative. So the first result that we got it positive was actually false positive. So monoclonal antibodies, they slightly restrict the false positive. They actually cross-react with other like antigen. We have discussed this point in the initial slides of monoclonal antibodies actually. And next is quantitative. So this is the second thing we need from immunoassay. So first we want to know either the sample is positive or negative. Once we got the positive result, then we are interested to know the level of positivity, like how much the concentration of antigen is there, for instance. So this provides numeric results that are an estimate of drug or compound concentration based on the measurement of labeled analyte in the solution and taking into account the consideration of competitive, non-competitive nature of the device. So by making these type of like settlements or equipments, we can find the concentration of analytes. In terms of use on drugs, this is sometimes complicated by possible cross-reactivities because the antibody can cross-react or the drugs can cross-react and so on. So quantitative and qualitative, these are the two things we need in the results from immunoassays. Is it clear? Yes, sir. कोई point, Yes, कोई sir. बात, कोई discussion, कोई like if you want to ask anything, please, we need to discuss. Or it is clear. It's clear? Yes, sir. So who will explain? Kalimullah. Kalim, you there? Yes, sir. जी, इस स्लाइड को स्किप कर दें. मुझे थोड़ी समझ आई इस चीज की. So I asked again and again कि आपको समझ आई है कि नहीं आई. ये बात तो ठीक नहीं. किन्जा, आपको समझ आई है? किन्जा माजिद. Maria is here. जी, फातिमा रमजान. Yes, sir. जी, आप बता दें. चलें ये स्लाइड.
सर इसमें ये है कि जो क्वालिटेटिव इसके बाद रिजल्ट्स हैं, एक मिनट इसके बाद मैंने कलीम आपसे पूछना, ये आपने एक्सप्लेन करना है केस, ठीक है? चलिए फातिमा सर please। इसमें ये है कि जो क्वालिटेटिव रिजल्ट्स हैं उसमें एक कट ऑफ वैल्यू होती है हर टाइप के इम्यूनो एसे की। अगर उससे कम हुई तो वो नेगेटिव होगी, और अगर उससे ज्यादा हुई उस वैल्यू से तो वो पॉजिटिव होगी। और अगर हमारे पास ऐसे होता है कि हमारे पास कलर आ जाता है किसी चीज का किसी इम्यूनो एसे में, मगर जब हम उसे रीवैलिडेट करते हैं तो वो नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब है जो पहले वाला रिजल्ट था वो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट है हमारे पास। और ये ज्यादातर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। और सेकंड में ये है क्वांटिटेटिव में ये है हमारे पास कि हम कुछ इक्विपमेंट्स यूज करते हैं जिससे हम ड्रग की कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं कि उसमें एंटीजन कितना है प्रेजेंट। और ड्रग्स के लिहाज से अगर देखें तो जो पॉसिबल क्रॉस रिएक्टिव्स हैं वो उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि वो किसी और से रिएक्ट कर सकता है इस तरह। ठीक हो गया।